Bismillahir Rahmanir Rahim. أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Translation: Do the disbelievers not realize that the heavens and earth were once one mass? Then we split them apart, and we created from water every living thing. Will they not then believe? Sadaqallahu We'll be today having 3 presentations. One on hydrogen energy and stamina. Then they have Chinese people, and then we have and I start requesting Professor Dr. Jameel Ahsan is organizing through her work. What is the presentation? Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Our respected speakers, my dear fellow engineers, our honorable guests, Salamat man ittaba al-huda. Hydrogen, the energy sector, the energy vector is emerging as a serial decarbonization agent. Policymakers in more than 40 countries are putting their weight to realize its potential. Hydrogen will be climate friendly depending upon its source. Production of hydrogen is referred to by different colors: grey, blue, green, and white. Depending upon the source, green hydrogen is produced using renewable energy and non-fossil fuel sources. Electrolysis of water is the key for the production of green hydrogen. It does not generate any direct carbon emission. Exchange membranes, PEM, and another exchange membrane will be used for the analysis of water into hydrogen. However, the greatest challenge to green hydrogen production is its cost. Firstly, there is need to get renewable energy cheaper. Secondly, the cost of materials in the electrolyzer stacks. Thirdly, the manufacture of electrolyzer stacks at massive scale. It is expected that the cost of green hydrogen will drop to below €7 per kilo by the year 2030. However, this is still between twice and 4 times the cost of hydrogen produced from fossil fuel. 70 million tons of hydrogen per year is used throughout the world. The standards have been developed
for transportation and storage of hydrogen. Strict attention has to be paid to the safety areas in handling programs, in handling hydrogen. Over the last more than 4 decades, production processes for hydrogen based on the chemical energy conversion technology, such as solid oxide fuel cell, SOFC, polymer electrolyte fuel cell, PEFC, water analysis using proton exchange membrane, PEM, anion exchange membrane, AEM, and production of carbon nanotubes using fluidized bed reactors have been developed. There is a ready market for the utilization of green hydrogen for the production of fertilizers in Pakistan. It is estimated that with the complete depletion of natural gas supplies in the country, the fertilizer production would need more than 1 million tons per year of green hydrogen in order to survive. It would need about 6.4 gigawatts of solar energy if membrane technology based on electrolyzers is used. Oil refinery will be needing about 40,000 tons of green hydrogen per day. Green hydrogen will be a competitive field for the internal combustion engines also, largely used in the transportation sector. Proper storage and dispensation of green hydrogen from fuel stations will be required to fuel the mobile market. We are grateful to our honorary speakers, particularly Professor Zhang from the Academy of China. We are very grateful that they have been collaborating us consistently. Whenever we invite a speaker, they very readily nominate one. So we are very grateful to the Professor Zhang, the Director and Chief Scientist, Institute of Nuclear and Energy Technology, Tsinghua University, and we hope that despite the fact that you would perhaps feel that this is not exactly green process which is being used in the nuclear energy, is called pink. After all, the nuclear energy producing hydrogen does not generate carbon dioxide. Therefore, we have included our program in the green hydrogen. I'm thankful to you, gentlemen, and I hope that you would enjoy particularly the presentations made by the speaker and by the Chinese professor, and you will get enough time to fill your very big question. Thank you. Thank you, sir. जस्ट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब हाइड्रोजन एनर्जी पे इतने से काम कर रहे हैं कि 1987 में इनके एक छोटे से लेटर पे मुझे पीएचडी हाइड्रोजन एनर्जी में एडमिशन मिला था. डॉक्टर वसीर Dr. Saab is an authority. I wish Pakistan used his that entire knowledge and converted that into products. हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को भी अप्रोच किया कि भाई इसे इम्प्लीमेंट कर दो. डॉक्टर साहब
डिजाइन को ले लो समझ लो, वो की समझ लेते हैं, काश को समझ लेते। अब मैं बहुत यंग डॉक्टर एहसन जलाल को, who is manager of Institute of Technology Assessment and Transfer और पाकिस्तान अकेडमी को दावत हुआ कि वो हम सबों को हाइड्रोजन की प्रेजेंट स्टेट्स पाकिस्तान में क्या पोजीशन है इसमें। What is first about hydrogen energy all over the world? We have the 2023 has been recorded as the warmest year over the recorded history. Their human activities has led carbon dioxide emission, and it is now 426 ppm, which is considered as point of no return. That is, if we don't stop making carbon dioxide emissions, we cannot get to the lower point. So this map shows this satellite image from NASA shows the carbon dioxide emission from around the world. As you can guess, it is the developed countries are the major contributor of the carbon dioxide. Led by the United States by 14.9 tons, Canada is 14.2, and India is 2 tons. Pakistan is 0.8 tons per capita. By the way, this is per capita figures. But if we talk about carbon intensity, Pakistan is among the largest contributor of the carbon emissions. Carbon intensity is carbon emissions per kilowatt of electricity generated. What are the solution? We can go to nuclear energy. Fusion energy is not matured. Fission, radiation, and security hazard, and then there are some political barriers as well. So other problem is the long-term storage. The problem is by the electrical energy from the renewable. If we talk about hydropower, not everywhere is possible. Secondly, wind and solar, it's a variable nature. You cannot use 24 hours. Again, because it generates electricity, we have issues with long-term storage. So the scientists come up with the hydrogen energy. Why hydrogen energy? No toxic or greenhouse gases. Well, this is debatable that it is greenhouse gas or not, because water vapor itself is a greenhouse gas, lighter than air, and the heating value of hydrogen is 3 times the gasoline. In this picture, I am trying to compare different fuels with the hydrogen. As you can see that if we talk about volumetric density, methanol, JPA, diesel, everything outsmart hydrogen energy. But when we talk about gravimetric on mass basis, we see that hydrogen is at 120 megajoules per kilogram, which is 3 times higher than gasoline, which is standing at 44 megajoules per kilogram. So there are different methods of production of hydrogen, and the production of hydrogen has been classified by colors based on the emissions and the production method. So if we talk about the conventional methods, it is natural gas and coal. We use steam methane reforming and coal gasification. And based on natural gas, if we produce hydrogen, it is gray hydrogen. And if we use coal, it is hydrogen, black hydrogen or brown hydrogen. If we use carbon capture, it is blue. If we talk about renewable resources, then electrolysis is used for hydrogen production from water. And if oxygen is released, then it is green. And if the nuclear waste is generated, it is called pink. So since we are talking about green hydrogen, so the main component is electrolyzer. Electrolyzers are classified based on their electrolyte type. There are 2 types of electrolytes, solid and liquid. In solid, let me talk about first about proton exchange membrane electrolyzer, or also called polymer electrolyte membrane. It is acidic in nature, as a solid membrane, and hydrogen is the carrier, charge carrier, and it is operated at 50 to 80 degrees centigrade. Anion exchange membrane electrolysis is also solid polymer. However, OH negative ion is transported across the cell, and it also operates at from 40 to 80 degrees centigrade. This is the most mature technology of electrolysis. Alkaline electrolysis. It uses KOH solution as a electrolyte, and it operates at 60 to 95 degrees centigrade. This is the latest technology, which is more suitable for the nuclear energy. It is solid oxide membrane, and it transports oxygen anion, and it operates at from 700 to 1000 degrees centigrade.
the major component of, if we talk about if we are going to develop 1 megawatt electrolyzer, there are 4 key components. Stack power electronics, which is needed for controlling gas conditioning, that is drying and compression, and balance of plant, which include a treatment of water as well. If we talk about the cost USD per kilowatt, alkaline is 270, starting from 270, PAM is 400, solid oxide is 690, and anion exchange membrane is less than 177 USD per kilowatt. However, the thing to be noted is AEM or anion exchange electrolyzer is not matured yet. It is there is no commercial plant available so far, so it is just an estimate. If we compare all the cost components, we will see that the cheapest one is the alkaline one with the range of 540 to 900 USD per kilowatt, and the expensive one is the solid oxide. Again, it is an experimental phase; it is not yet commercially developed. If we talk about the average cost of production from different methods, let's compare with the grid electricity. If we are using electricity taken from the grid, generated from fossil fuel or whatever. So we find that the 10.9 USD per kg is dollar per kg is the cost of the hydrogen production, and the major component of the cost is the electricity cost. Capital cost is because of the electrolyzer. If we compare it with the reforming steam methane reforming with carbon capture, the cost is $3 less, and the major cost is again because of the natural gas. Okay, let's talk about the renewable energy. Renewable energy is not that cheap so far. It is 7.6 USD per kg. And one thing which you should note is this is the tax. By the way, this cost is based on the Europe in 2022. So the European Union has given tax relaxation to the green hydrogen production. That's why it is a little bit cheaper, and there is no carbon cost. And the other cost, for example, reforming, are some sort of carbon taxes. And if you compare it to conventional steam methane reforming, check this. There is no almost negligible capital cost. The cost is the major component is the gas. And despite there is carbon dioxide tax and everything, it is still cheaper than any of the method. Let's talk about the global hydrogen activities. So far, this atlas map shows all the countries which have released their hydrogen strategy. So if we talk about United States, so it has decided to make 10 million metric tons of green hydrogen, and they have invested approximately $10 billion in the green hydrogen. China has decided to meet 0.2 million metric ton of its green hydrogen demand by 2025. Germany is, I think, leading the way in this respect because they have injected around $10.3 billion. And they are not just focusing on the green hydrogen production, they are also focusing on the manufacturing of the electrolyzer. And they have decided to prepare, manufacture or establish 10 gigawatt capacity of electrolyzer by 2030. Russia is focusing more on export, and they have decided to export 15 million metric tons to all over the world. European Union is focusing on different strategies, different type of strategies, I will say, because not only they are focusing on the manufacturing of green hydrogen, but they are also talking about importing. And one of the major deal they have stuck with India, and they are going to export from India and Northern Africa. Also, they have decided to establish 175 gigawatt electrolyzer capacity in European Union. India is focusing on the production of 5 million metric tons of green hydrogen by capacity by 2030. So if we talk about it in general, all the countries are talking about making approximately 5 million metric tons of green hydrogen by 2030. However, the main thing is that some of the forwarding-looking countries are also focusing on electrolyzer manufacturing. So, and not only that, electrolyzer manufacturing, but they are also focusing on fuel electric vehicles. That is, hydrogen will be used as fuel.
let's talk about Pakistan. There is no official strategy yet. In 2022, PAE took initiative to develop a strategy for Pakistan, and they submitted to Pakistan Engineering Council. Let's not talk about the updates. Ministry of Planning of Commission has decided to issue a hydrogen strategy by December 2025, and the collaborators will be Ministry of Energy, Science and Technology, Industries and Production, and Climate Change. Since they have not released what will be their outlook, my general guess is that they will be focusing on production, not the manufacturing of electrolyzer. And of course, export will be their focus as well. So green hydrogen for Pakistan. So, by 2050, Pakistan, all the countries has to meet global net zero target. And we cannot achieve it without switching to renewable resources or hydrogen energy. It can also earn carbon credits, which can be traded in the carbon markets. And currently in Pakistan, only green projects are funded by the lending agencies. So it will attract foreign direct investment, which we need too much. Increase energy security. We know that most of the imports are from hydrocarbons. If we want to get rid of that, we have to focus on the indigenizing of the energy sources. Food security. Hydrogen is needed for fertilizer industry and cooking oil industry. And now we are running out of methane gas. If we want to think about fertilizer production, we have to focus on hydrogen energy. The current methods of hydrogen production in Pakistan. So in general, Pakistan is making hydrogen from methane steam reforming, and major producer are fertilizer industry and cooking oil industry. And they approximately, these are basically estimates, 3,000 tons per day. And they produce, and this again, because it is methane steam reforming, gray hydrogen. There is a new, not new actually, conventional process, which is naphtha reforming. They produce hydrogen from the dehydrogenation reaction. All the refineries of Pakistan, approximately, which I have naphtha reforming, they produce hydrogen, and the estimation is 50,000 tons per day. In Pakistan, hydrogen is also produced by water electrolysis in power generation companies. By the way, these are the actual pictures of electrolyzer which was taken during the visit of Dr. Naseem to power plants. The production is estimated as 3,000 tons per day, and they use alkaline water electrolyzer. However, this is not green because the electric source was either coal or gas or furnace oil. Initiative taken in Pakistan. So NIGA started a pre-feasibility study with the support of Asian Development Bank. And the results are very interesting, by the way. I will suggest you to look at it if you are interested in hydrogen energy. But the main aspect is they suggest that there should be seasonal hydrogen production and underground storage in salt caverns. And it is the most feasible option for Pakistan. Due to tariff structure, nuclear hydrogen is cheaper than solar wind energy. And they have suggested some pilot projects. One is from the to be installed at Ghazi Bortha Dam with hydrogen injection to the local natural gas. And the date is 2026. I tried to get the update on this project, but couldn't receive any positive response. Then there is another electrolysis project at Qaid-e-Azam Solar Park. To be honest, I don't understand why they suggested it, because already the cost of the electricity from solar is high in Pakistan. So why they suggested, I didn't get the idea. And the project is at the 2028. Let's talk about Ablekal Power. They were the first one to decide to install a hydrogen power project over here in Pakistan, and they have conducted green feasibility with Chinese company and German company. The interesting part is that they have reported the cost of $1.5 per kg. How? It is still questionable. The project details are 55,000 tons of per year of hydrogen, and they will also produce ammonia, focusing on export, solar power, and they will use solar power 800 megawatt, wind power 500, and they will also utilize a battery. So the challenge is in green hydrogen for Pakistan. Cost of production. It is energy intensive, and energy is expensive in Pakistan.
Another one is called cost of cell stacks. That is electrolyzer, and it cannot be loaded without the local manufacturing. Over here, I will mention that for manufacturing of electrolyzer in Pakistan, we have no idea that which minerals which we can use in Pakistan, because there is not even done geological survey for those kind of material which are needed in the manufacturing of electrolyzer. Storage. Technologies available are ammonia, salt caverns, and storage tank, which is suggested in the NICA pre-feasibility. But there is a catch over here. They are all energy intensive. Ammonia, yeah, you can prepare the ammonia, but who is going to crack it? Today, the ammonia cracking or extracting from hydrogen from ammonia is still very immature, and it is at the lab scale. You need around 500 to 600 degrees centigrade to decompose ammonia. Salt caverns, there is no commercially available option. Storage tank, yes, it is in Pakistan also. There are many storage tanks for hydrogen. So this is, but the cost of compression is going to be higher. Water availability. This is going to be another challenge for Pakistan. Pakistan is already a water-scarce country. Climate change has decreased our river flows from north to south, and our 70% of water is used in irrigation. So how we are going to meet that demand if we start producing hydrogen in a huge quantity? So I will conclude my presentation that hydrogen production can, of course, ensure economic activity, energy, and food security. Feasibility reports say renewable energy is not feasible. Only hydel and nuclear energy are feasible for electrolysis in Pakistan. Cost plus water availability is going to be major challenges for production of hydrogen. Thank you. If you have any question, you can. कराची नेशनल गैस की लाइन में इंजेक्शन कर दिया है तो ये इसकी जो सेफ्टी मेजर वगैरह अमेरिका और यूरोप के अंदर जो इन्होंने स्टडीज कंडक्ट की हैं उसके अंदर इन्होंने जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है नेचुरल गैस का उसके मुताबिक ये कहा कि 15% तक तो कोई इशू नहीं है, उससे आगे जो है इनको स्पेशल अलॉय मटेरियल बना के इनको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ 10% 5% तो की जा सकती होगी। टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं हुई अभी तक। जी 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 वाटर को इस्तेमाल करने की कोई पॉसिबिलिटी है? सी वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इवन लार्ज स्केल पायलट प्रोजेक्ट भी नहीं लगा उसके ऊपर। अगर मैं मेरे पास स्लाइड है जिसमें मैंने बात की है टेक्नोलॉजीज की रेडीनेस लेवल की। अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सी वाटर जो है 5 लेवल पे लार्ज प्रोटोटाइप तो बन गए, लेकिन अभी पायलट स्केल पे भी इनकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई है। बट प्रैक्टिकली इज पॉसिबल टू स्टेप कर ले जी, पहले टीडीएस कम करें उसके बाद फिर को रिहैबिलिटेशन पे चले। रिसेंटली असल में मेरी नजरों से एक मिनट गुजरा था, एनईटी के किसी लड़के का था, उसने यूके में रिसर्च की है सी वाटर के ऊपर, और उन्होंने बगैर किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्ट सी वाटर डाला है और उसको उन्होंने इलेक्ट्रोलाइज किया। तो पॉसिबिलिटी तो है कि डायरेक्ट भी हो जाए। जो वाटर प्रॉब्लम रिसॉल्व बिल्कुल दैट रिस्ट्रिक्शन वुड बी लिफ्टेड। बिल्कुल एक्चुअली अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर में ये पॉसिबिलिटी आज की सकती है। पाकिस्तान में ऐसे प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्लांट से क्लीन वाटर लेते हैं और इन वाटर के जरिए वाटर लिक्विड करके आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। हो रहा है इवन पाकिस्तान में हो रहा है, कराची में। मतलब वो क्या तो बात हो रही है ना ग्राहक के लिए बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है अपने जगह, लेकिन तो आपको कोई एडजस्ट करता पाँच में मतलब ये लिमिटेशन जो है कि वाटर की एबिलिटी का वो खत्म हो जाएगा। वो है लेकिन कलाट की बात करना मुझे जिसकी बात कर रहे हो उस पे आ जाएगा। अब तो प्रोसेस को आपको डिजाइन करना है तो यू कैन डू इट या टेक्निकल पॉसिबल। I don't understand. Why don't we go for biohydrogen? Star fermentation या gasification? अगर आप टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल का देखें, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो बायोमास गैसिफिकेशन स्टिल इन डेमोन्स्ट्रेशन फेज, इट इज नॉट कमर्शियल।
तो दूसरा ये है कि जो जैसे I don't know, doctors have advised them. He went to Japan, okay, and वहाँ पे भी जो वो गैसिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी ये था कि हर कोल से एमोनिया एंड हाइड्रोजन बनाने का है, तो उसका वो प्रोजेक्ट के बारे में आपने क्यों नहीं कहा? मतलब वो एक बहुत बड़ा आपके पास सोर्स है एंड वी आर जस्ट कंज्यूमिंग दैट रिजर्व दैट कोल लाइक एनीथिंग बर्निंग ऑन द माइंड माउथ इज नॉट समथिंग इंटेलिजेंट, तो वी शुड promote that idea. I mean, कि हम उसको liquefaction of coal को करके उससे fertilizer and hydrogen बनाए and will have abundant quantity of that. So that idea should be promoted. आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त कार्बन बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बहुत मुश्किल से फंडिंग मिलती है। सिर्फ चाइना ही आपको फंड करेगा और कोई नहीं करेगा। सीपीसी प्रोजेक्ट में अगर ये आ जाए तो फिर लाजमी ये हो सकता है, वरना मुश्किल होगी हमारे अपने लिए तौर पे तो मुश्किल होगी। If there's a commercial value, I mean, China will fund us, and I mean, who cares? So where the fund is coming from? The thing is that if you are making money, who cares? इसकी एक और मैं आपको बता दूं, ये रिसेंटली थोड़े अर्से पहले की खबर आई थी कि यूरोपीय यूनियन जो है कंसीडर कर रहा है कि जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फ्यूल यूज कर रहे हैं उनकी या तो प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, या नहीं हमारी यूरोप ही आपका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट वो है हब है। अगर आपकी वही बैन हो गई किस तरह रेवेन्यू जनरेट होगा? अभी आपका सबसे बड़ा वही है। When you are rich, you don't care about it. हाँ, सही बात है। क्वेश्चन किया है, मैं थोड़ा सा उसके जवाब दे दूं कंसर्न के थल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान अकेडमी पेजिंग वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू मूव द आइडिया। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हमने थप्पा हमने की, सिंध गवर्नमेंट ने की, किसी और इलाके ने की, एंड वी प्रपोज कि द होल इशू should be bundled up and a chemical complex should be organized properly. It will take time. And obviously for that you have to acquire know-how. So we had suggested that the know-how is available. Formerly it was South Africa, but now China. They have got also the same know-how, which South Africa utilized for making complex for their own, and they were very successful. So this was what we did. The point is this, that all that needs proper decision making at the federal level and also the provincial level, because after all, mining is the provincial subject. So I propose that in times to come, Pakistan Academy will again put the idea of reviving the concept. This project should be developed into a full-fledged complex chemical complex. One more point to add. So at that time, I mean, if I can recall, Anglo was of the opinion that producing fertilizer from sun would be more expensive than importing. But now everything has gone up. So, I mean, importing fertilizer would be more expensive than indigenously producing. So that is commercially it is coming out to be viable. So we should, I mean, push this idea. I think I will supplement your answer because I just recently visited Tharna. So I see a lot of activities going on. Now top one और ये सारी जगह भी काम शुरू हो गया है. So जब बैंगलोर ने काम शुरू किया था, they were more interested in like mining पे ज़्यादा उनका तवज्जो थी. अब उन्होंने एंग्रो ने भी लगा लिया और प्लांट फिर बाकी लोगों ने भी लगा दी है, आपको ने भी लगा दी है। हम बच्चे जैसे बच्चे तो फिर खिलौना नहीं मिलता है ना, वैसे ही हम अपने को थर्ड पोजीशन मिलता है। बर्निंग on the mind mouth, that's all. Yeah, but वो एक टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई ना, ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जब पीजी की सर्कुलेटिंग फ्लोराइड बेड में लाइक 2005 में तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी सर्कुलेटिंग फ्लोराइड बेड की। अब नाउ जितने भी पावर प्लांट्स हैं एट they are all using circulating फ्लोराइड बेड combustion. So like टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई है, आपको ने भी और प्लांट उसी टेक्नोलॉजी पे लगे हैं, कराची में भी ऐसे ही लगा हुआ है। So like टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, अब now it can burn anything. You know, मैं बात करूँगा अपनी प्रेजेंटेशन में like on biomass. So biomass could be a wonderful potential.
हम तो वो होता है ना, तो जलाते लाहौर वाले चला रहे हैं, एरिया में स्मॉग हो जाती है, तो वो खुद तो भट्टों में जलाते रहता है, आप कहते हैं। तो नाउ टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली इवॉल्व होती है, जैसे सर कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं एंड नोबडी केयर्स। अब आप घर में देखिए, लोग रिच हैं, वहां अब वो गुर्बत खत्म हो गई है, पानी वानी बहुत है, अबंडेंस अवेलेबल, बिजनेस का सोच रहे हैं, सो मेनी रेस्ट हाउसेस दे आर मेड, यू नो, लाइक द थिंग इज ऑलरेडी चेंज। लाइक आज से 10-15 साल पहले गया तो गरीब थे बहुत, अब गरीब नहीं है, मतलब गरीब है लेकिन स्टिल दे आर नॉट लुकिंग फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बाजार में तो थोड़े दिन बेटर थे, उन्होंने अपने रेस्ट हाउसेस बना दिए एंड इतनी टूरिस्ट जाते हैं वहां, मैं हैरान हो गया कि राइट लाइफ 12 बजे चलती है, मिट्टी में भी सो सकता है कि रात के 12 बजे लोग रोड पे घूम रहे हैं। और देखिए हमारी पॉलिटिक्स वो यूरोप के अंदर डिपेंडेंट यूनिटी के वहाँ पे क्या करेंगे, कोई हमें क्या हमारा अपना इंटरेस्ट, and that's what we should promote this idea. But we have taken कोई और क्वेश्चन है with the author? Actually हमने डॉक्टर साहब से विजिट जो किया उसमें तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात हुई, मेरी अच्छी तरह से साथ में आपके एक्सपेरिमेंट हो गया हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हमारी कोई यूनिवर्सिटी इस पर काम नहीं कर रही, सारी यूनिवर्सिटी काम करना चाहिए। मैं आपसे थोड़ा गया कि इस तरह से भी बेस्ट होगा, आपको करना करेंगे काम पे काम कर रहे, लेकिन आप सारी यूनिवर्सिटी को इस पर काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, मैं 2 बात से कहा कि since our Chinese speaker has not come, we take a few minutes to issue the few minutes. हमने सर को भी बहुत बात की, सर को या कौन पे कोई भी PhD मौजूद। अब हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास PhDs इस एरिया में तैयार करने चाहिए, पूरे नेशन को हमें फोकस कराना चाहिए और टेक्नोलॉजीज और उस एरिया में हमें काम करना चाहिए। एक एरिया मुझे बहुत डॉक्टर साहब से मैं हमेशा बैटरी पे काम करने से खुशी हुई सुन के लिथियम आयन बैटरी पे काम किया। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए पाकिस्तान अकेडमी में इंजीनियरिंग में आए और हमें एजुकेट कीजिए ऑन बैटरी। एक एरिया ऑफ फोकस पाकिस्तान बैटरी स्टोरेज, लिथियम आयन बैटरीज डेफिनेटली वन। हमें इस एरिया में कम से कम 50-60-100 PhDs पैदा करें लोकली भी पढ़ने। इससे मुझे एक सवाल है मेरा कि व्हाई जापान इज गोइंग फॉर हाइड्रोजन, वो बैटरी पे लिथियम बैटरी पे नहीं जा रहा है, ठीक है, हम ताकि कोई क्या हो जाए क्या कहीं मैंने why Japanese are, I mean, they are adopting a different course. Why? Well, because they are going for hydrogen, they are going to hydrogen, and they are not going after the rest of what the rest of the world is going after. डॉक्टर को जवाब भी पता है आप अपने से सुनना चाहते हैं। एक्चुअली जो जवाब से ये है कि चाइनीज जो है और जापानीज जो है वो चाइना के अंडर कमांड नहीं जा रहा है। Lithium ion batteries, it's for 99% production is China. तो अगर lithium ion बैटरी पे जाते हैं तो चाइना विल डोमिनेट, वो जो पसंद है, और इसीलिए वो डायरेक्ट स्किप कर रहे हैं द बैटरी स्टोरेज टू हाइड्रोजन डायरेक्ट। एंड दिस वाज डन जब they are doing for 40 years now हाइड्रोजन, they became that उस वक्त से जिन्होंने 80 से और काम शुरू कर दिया था। उसके इंटरेस्टिंग टॉपिक आप कह रहे हैं। देखिए जब ये इसकी हाई डेफिनेशन टेलीविजन का आया था तो जापान में जो है वो एनालॉग पे किया, अच्छा बेस्ट चला गया था डिजिटल पे, तो फाइनली उन्होंने अपना डिजिटल करवा के जापान को बैठा दिया, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन एंड लिथियम इसकी भी एक बहुत वॉर है एंड हु इज गोइंग टू विन, ठीक है ना। तो मतलब चाइना जीतेगा। मगर I think Japanese is a well thought race, so it's not something that they will easily concede. And we should also think of doing something. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हमें PhD करना चाहिए इसके लिए, हाइड्रोजन पे हमें फोकस कर लेना चाहिए, लिथियम आयन बैटरी पे
कौन वॉलंटियर कर रहा है कि अपनी यहाँ पीएचडी होगी अरे तो यूनिवर्सिटी के लोगों से अब यूनिवर्सिटी ये तो डॉक्टर इरफान बैठे हैं एनडी एनडी कर सकता है दाऊद कर सकता है लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली ना पीएचडी में हो गए इन्फॉर्मेशन मॉडल से इतना चला है जरूरत नहीं है चाहते हैं मैं वो बात करना चाहता हमारे यहाँ कोई स्ट्रक्चर स्तर बना हुआ है जिसमें बाहर जाते हैं मेटलर्जी मटेरियल्स को और यूनिवर्सिटी में 2020 से मैं मेटलर्जी का प्रोफेसर हूँ तो मैंने पीएचडी की लेकिन मैं ब्रिटिश में मैंने कोई सॉलिड डेवलपमेंट मास्टर था एलईडी से तब वैसा तो मटेरियल्स इंजीनियरिंग से तो मेरा मकसद कि यहाँ पे हमारे यहाँ ही 4-5 जो पीएचडी कर रहे थे वो भाग के चले गए बाहर क्योंकि यहाँ पे फीसेज और दूसरी जो है ये भी बड़ी वजूहत तो स्कॉलरशिप मिलती है आजकल तो एचईसी ने भी जो है बड़ी वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि मैं नहीं दे रहा हूँ तो बहुत सारे वजूहत है उनको प्रमोट करना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म से या इवन जो हमारी यूनिवर्सिटीज है अब यूनिवर्सिटीज भी कभी कभी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है भाई हमारे पास जो है ना बजट नहीं है हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम कैसा करें इवन अगर लैब की भी हम बात करें तो क्योंकि मैं खुद जो है ना फेस कर रहा हूँ बड़े चैलेंजेस काम को लेके चल रहे हैं तो गाड़ी वो उसके बावजूद भी हम चल रहे हैं तो आप जितने भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए जो इवन ये बात मैंने एचईसी में भी कही और इवन मैं प्लीज तो करंट में रिवाइज होता उसका भी मेंबर हूँ लेकिन इसेंस से मैं पेडोलॉजी मटेरियल से मैं जरा सा मुकाबला कर दूं सर और डॉक्टर शाही साहब की इंफॉर्मेशन के लिए कि जापान इस वक्त जो सबसे बड़ा मंसूबा उनके सामने है दे लाइनिंग अप विद ऑस्ट्रेलिया and they want that the liquefied hydrogen should be shipped from Australia using renewable energy to Japan. ये इनका सबसे बड़ा मंसूबा दूसरा नुकता जो आप उठा रहे हैं कि इस वक्त हायर एजुकेशन पे बहुत खबरें आ रही हैं आपने पढ़ा होगा देखा होगा कि दैट इज इन Zuoyi. Even the government spokesman he pleaded for looking into what is happening in higher education and then now this is Pakistan Academy of Engineering is in a mood, I tell you, to convene an all-Pakistan conference on higher education in times to come in the course of time. That I'll let you know. Thank you. चलेंगे मगर मेरा शुक्रिया ये we have our next presentation उसके लिए Chinese expert was supposed to be there unfortunately he's not on the joint so far मैं अपने next speaker से request करूँगा कि वो पहले आपकी बात कर रहे on green hydrogen in Pakistan Dr. Ahmed, the Dean of Engineering and Advanced Sciences at Zuoyi University, kindly educate us. Presentation. क्या वो चाइना वाले थे ऑनलाइन हम इस दौरान में सिर्फ डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप जैसे चाइनीज मैं आपको देंगे नो प्रॉब्लम because of the internet issue. Yes, sir. पॉइंटर नहीं होता पॉइंटर नहीं अच्छा पॉइंटर नहीं इट्स ओके मैं जरा शेयर कर दूं स्क्रीन ठीक है Thank you. I hope I'm audible. yes, Okay. Thank you, Dr. Jameel, for inviting me for this talk. Basically, I'll be talking more on the production methods, or talking about the status of hydrogen. How can you produce hydrogen
whatever we have available in Pakistan. So probably I'll be talking more. और वो अच्छा हो गया, fortunately connect हो गई है presentation. कुछ questions आए थे तो I'll see how can I answer that. Yeah, चलेगा. Okay, I'll do from here. Okay. We all know that hydrogen is the most abundant material, hydrocarbons, whatever we think of, it has hydrogen. So, and of course, the hydrogen is existing for millions of years, and it has been used for creating all the fossil fuel we have in the world now. And basically, the problem is the hydrogen is highly inflammable. So, इस वजह से भी अभी तक इसकी जो usage है ना, वो इतनी potential अभी तक commercialize नहीं हो सकी because of its like storage and usability जो है वो as a fuel वो थोड़ी सी रही. So source of hydrogen जो currently है वो natural gas है, electrolysis है, वो water, coal, gasoline है, methanol है. One of the least discovered जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए could be very useful is the biomass. So we can use the biomass for production of hydrogen. I used to do it in 2003 when I was in Malaysia. I was doing my PhD there, and we were producing hydrogen using that. So Pakistan आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि इसका अभी तो कोई भी even people are not aware of that that we can use it. We were just using burning it off the field. When we go around the railway tracks, we always see the biomass burning there. अभी भी आप जाएं तो आपको नजर आ जाएगा. So इसके अलावा the other methods people are always using like solar energy, photosynthesis, composition. Of course, the use of the fuel cell is being commercialized in few countries in Europe. So of course, hydrogen has a lower density, so of course it has potential of compressibility and transportation. So other the safety issues like making hydrogen stations is not so commercially viable because of its flammability, and of course the regulation standards pretty strict regarding storing and use of hydrogen or natural source नहीं है तो hydrogen make ना. So either we have to go for some processes like be a chemical process, maybe using high temperature gas cooled reactors, the nuclear reactors. Probably would talk China, so they will be talking more on that. So that would be one of the method. So economical process is important. For commercialization, it's very important that we have economical process, the abundant supply, so that the supply chain market could be developed. So discussion क्योंकि already हो चुकी है. Hydrogen, natural gas है, coal है, gasoline है. Of course, ये क्योंकि developed methods है, people are using it for a very long time or commercially available है method. Already मुझसे पहले speakers ने already talked about that. ठीक है ना? But the problem जैसे उन्होंने खुद ही बताया कि there are finite resources. हमारे पास जो fossil fuels they are in finite quantities, so we cannot expect for a long term production of hydrogen using these methods. Okay, so using coal. थोड़ी सी मैं इसलिए बात करूंगा कि essentially Pakistan has now almost like in the coal business. More plants are coming up, and we are utilizing low grade coal in Pakistan, which is like 184 billion tons, maybe available for more than 100 years now. So can be used for more than 100 years. So we can see the third coal in the market for a long time. So there could be a big change. And of course, pointer nahi hai, lekin anyway, I'll try again. Basically, we can we can use the fluoride band gasifier, and we can convert whatever we have, if the coal available we can gasify. Of course, the cleaning is an issue. So the cleaning can be done, and once we have a cleanup, then the hydrogen produced can be used in the fuel cell, and of course it can run the whole power cycle. So that is something we can have a whole complex available for that. So we can use our gas turbine with the clean gas, and of course we keep the heat exchanger available. We can use our steam cycle. So the whole power plant, the existing structure we have in Pakistan can benefit for it. Of course, currently we only have
fluidized bed reactor, we'll be using supercritical boilers. So, like the technology that have come over the last 5 or 10 years has really changed the whole power structure, because people were not heard about supercritical boilers, but now they are operating. People are using supercritical boilers. So they are installed in third. So nobody thought of having a steam of 30 megapascal and around 600 degrees C. Now this is a reality. It's available now. And of course, it has resulted in a good, amount of energy that generating. So now that could be the key. Like if I look at the Pakistan scenario, that could be the key game changer. If we can, like in the next 5 years or so, we can have such kind of system installed in the third, where they could be making hydrogen and using the temperature of the gas by running their gas turbine. And down the line, they already have the steam power plant. So they all will be running together. So there will be the whole complex that will be running. So probably, I think that could be the game changer. That could be the one of the game changer where the low grade coal, which doesn't have an international market, nobody is willing to buy our third coal because it's a low grade coal. Transportation cost है इसकी बहुत ज़्यादा, फिर like drying cost है, and then like it can be only used locally. जैसे सर ने कहा कि वहीं पे use करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा. Even transportation cost will not make it so viable for exports. So that cycle could be a very good game changer for making cheap hydrogen. The hydrogen that have commercial viability, even the storage, compressibility, and of course the export can be one of the viable options. So जब भी मैं refer करूँगा, probably I'll be referring that, because like even having a technology understanding takes time. People are now familiar with the fluidized bed reactor. Of course, fluidized bed reactor has been used in chemical engineering for a long time. But circulating fluidized bed using for as a power production, it's a different ball game. It's a different technology. It's a different understanding. But now people are used to it. I remember I used to like 2009 or 10 when the Anglo was having their first plants regarding that. They asked me to talk to their engineers about circulating fluidized bed reactor, because before they went to China for training. Of course, when you go for operational training, it's a different ball game. Normally, they teach you about how to run the system, like the safety measures and all things. But the science, the understanding, the physics, the technology, you need to understand also that what is happening inside the reactor, how it's happening. For example, if I just briefly tell you about the circulating fluidized bed reactor, it has very less moving part. It's just using sand. It's the sand circulate because the sand circulate the whole reactor. It goes up and come back again in the reactor. So that very heated sand can break up a coal particle in thousands of millions of small particles. That's why they burn so efficiently. The combustion efficiency of a circulating fluidized is more than 90%. So that was a real game changer in the whole coal technology. The pulverized coal just vanished away after the circulating fluidized bed technology came. I'm just talking because we're all engineers, so you can appreciate that how the technology changes the game. So I understand availability of the third coal. The technology has now really matured. We can use that opportunity. Okay. So basically, मैंने इसकी education में बहुत सारा कह दिया है. Of course, disadvantage तो of course is not a carbon neutral. Of course, it produces carbon dioxide. तो हमारी population भी इतनी सारी carbon dioxide produce कर ही रही है. It's okay. We can just mind if we have money in our pocket. At least that carbon dioxide will bring us money also. So that could be a thing. Environmental concerns है, of course, wherever there is a power generation or environmental concerns होते हैं, of course, but benefits भी उसके साथ आते हैं. For example, I used to visit a lot. आप लोग भी जाते रहे होंगे सिंगापुर, तो वहाँ पर हर घर में ना air purifier लगा होता है. It's common to have a air purifier in a home because ज़्यादातर apartments में रहते हैं, बड़ी multi stories होती है, वो polluted है. But because they have money in their pocket, वो air purifier लगाया हुआ और घर ठीक है, वो चला रहे जिंदगी. So of course, this could be issue, this could be disadvantage, but I don't think so. It's a very severe problem currently for Pakistan. At least we should take advantage of the resources we have.
Gasoline, of course, the gasoline has been used as a commercial technology currently available. Nuclear, of course, nuclear. वो बात करेंगे हमारे Chinese counterpart more on that, but of course the high temperature gas cooled reactor, they still are in the experimental, but we have a very good potential of producing hydrogen. Renewables के मैं असल अपनी talk शुरू करूँगा कि why I'm educating about renewables, because we are an agriculture country. We produce millions of tons of waste every year. So waste का कोई chain नहीं है हमारे पास कि how to utilize that. I have because I studied from Malaysia, so 4 साल में रहा भी हूँ, so I try to study their mindset also. That how they are building up. So उनका जो because they had the major production of palm oil, they are the major producer of the palm oil. So उनकी economy they revolve around the palm oil. And palm oil जितना produce होता है उससे ज़्यादा waste produce होता है. So I have when I joined my university, I thought in my department, the mechanical department, 70% of the projects were revolving around palm shell waste, palm oil या palm shell waste के around होते थे. So I used to see that why they are so they crazy about they all the students are doing PhD or masters in this area, also the different domain. Some were working on the utilization of the palm shell waste. Recently मेरा अभी पाकिस्तान में एक authority है, वो basically highway coastal authority, Sindh coastal highway authority है. They got like 300 acres of land and they wanted to have palm tree plantation and छोटा सा उन्होंने plant भी लगाया palm oil extraction का. I used to work with them and उनको फिर समझ में आया कि भाई जो palm होता है इसमें एक तो main जो उसका seed होता है उससे squeeze करके oil निकालते हैं, उसके अंदर एक और गुठली होती है उसमें से oil निकलता है, that is used for cosmetics. So like they made their whole chain और उसका जो waste होता है वो boiler में use होता है जो कि they are used in the palm जो oil के plants हैं उसका waste boiler से निकलता है and boiler is run by the waste of that thing. अब जो shell बच जाता है उससे वो furniture बनाते हैं compress करके. So they have almost like a zero waste engineering for their waste for the palm shell. So उन्होंने zero waste पूरी cycle develop कर ली. So that अदरवाइज वो कहते थे कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारा पूरा मुल्क जो है वेस्ट से बढ़ जाएगा. So that's how like they focus all this, and the other is the automotive. उन्होंने अपनी automotive और manufacturing industry को बहुत ज्यादा जो है वो तरक्की दी because they thought that they can can well indoor. तो हमारा जो manufacturing या industrial engineering का department था मेरी यूनिवर्सिटी का, वो almost NED के समझ ले के 1/4 साइज का था, इतनी बिल्डिंग्स थी उसके पास और वो सारी प्रिसिशन मशीनिंग्स पे काम करते थे और वो लेंसेज बनाते थे. They used to make eye lenses. So see how they convert into a value added product. So what I think that the biomass conversion in Pakistan has not has picked up because of many reasons. Because के एक तो ये कि हमारे ज्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो शहरों से होते हैं. They have not seen the village life. उन्हें अंदाजा ही नहीं कि village life क्या होती है, village की टेक्नोलॉजी क्या होती है. उन्होंने अपने तौर पे बेचारे वो करते रहते हैं experiments करके कुछ बना लेते हैं. So the green hydrogen can really come from the biomass waste we have available in Pakistan because हमारे पास जो हमारे पास एनर्जी डिमांड बहुत बड़ी है, कोई 84 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है एंड कोई हमारे पास 60 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल है इंपोर्ट्स करते हैं हम, और बाकी हमारे पास गैस है जो डिप्लीट हो रही है. तो बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री हम काफी जो है वो हमारे पास जो 1 मिलियन टन्स ऑफ पर ईयर ऑफ एग्रीकल्चर बायोमास है, टन्स हैं, that waste could be utilized in a number of potential things, and one of the things that we can be of production of hydrogen. So biomass conversion technologies Java में काफी mature हो गई. Like I have recently seen a number of biogas plants villages में. ये बिल्कुल एक समझ ले कि एक डिफाइंड टेक्नोलॉजी बन गई है. उन्होंने एक जगह बनाई है जहाँ वो सारा काउडन डंप करते हैं और उसकी जो गैस बनती है उसे वो गुड़ बनाते हैं जो भी उसमें अपना यूज करते हैं या हीटिंग के लिए या बॉइलिंग के लिए वाटर को दे आर यूजिंग इट फॉर बर्निंग.
तो ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है पाकिस्तान में। इसी तरह जितने ट्यूबवेल्स हैं दे आर ऑल रनिंग ऑन सोलर। आप अगर गुजरेंगे पंजाब में किसी भी रोड पे गांव में तो आपको नजर आ जाएगी बेशुमार फील्ड्स के अंदर सोलर पैनल लगे हुए। तो हमें समझ आ गई कि 8-10 लाख रुपए लगाए ट्यूबवेल चल जाता है एंड वो अपनी कॉस्ट पूरी कर लेता है 2-3 साल में। तो दे आर फाइन विद इट। तो एसेंशियली ये टेक्नोलॉजी वहां तक तो उन्होंने कर ली है कि भाई दे आर मेकिंग बायोगैस, दे आर यूजिंग सोलर फॉर देयर पर्पस। नाउ वी नीड टू हैव वन स्टेप अहेड। जैसे इंडिया ने गैसिफिकेशन जो है वो विलेज स्केल पे कर दी है कि वो गैस बना रहे हैं उसमें वेस्ट से एंड दैट गैस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। वो इंजन लगा दिए उन्होंने, उससे बिजली बना रहे हैं एंड यू नो लाइक तो वो लोकल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो एसेंशियली यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब हमें एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा आगे जाना है इस पे। एसेंशियली ये बायोफ्यूल्स भी हमारे पास अब बनना शुरू हो गए। पीएसओ हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इन बायोफ्यूल्स एंड उनका भी काफी एग्रेसिव है कि वो बलूचिस्तान में काफी लैंड उन्होंने एक्वायर की है, जट्रोपा बना रहे हैं। 10% जट्रोपा मिक्स करके डीजल के साथ बेच भी रहे हैं पीएसओ पेट्रोल पंप्स पे। इसलिए देर से हमारे ग्रीन पंप्स का ना उन्होंने एक स्लोगन सा अडॉप्ट किया हुआ है। सो एसेंशियली बायोफ्यूल भी अब मैच्योर हो गए पाकिस्तान में। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द इंजन, वी कैन गो फॉर अ हायर लिमिट। गैस टर्बाइन शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो यूके में जो एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनीज हैं, दे हैव प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट इंजन वर्किंग ऑन बायोफ्यूल्स। तो ये जो अब ये वाली चेन है ना, क्योंकि जब तक लोग जिंदा रहेंगे खेती बाड़ी होती रहेगी, रेजिडुअल्स भी होगा, वी कैन हैव ऑयल, so we it will always be available. So I think that could be something that has an opening. तो अच्छा, दूसरा ये कि ऑफ कोर्स जो लोग थोड़ा सा बायोमास की टेक्नोलॉजी समझते हैं, बायोमास ऑफ कोर्स इज नॉट ए गुड फ्यूल, ठीक है ना। बर्न होने की वजह से उसकी वजह से इमिशन भी ज्यादा होती है और प्रॉब्ली फ्लाई ऐश बहुत जनरेट होती है उसकी वजह से। दैट फ्लाई ऐश कैन बी एनवायरमेंटल कंसर्न, ठीक है ना। तो इसको भी लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। बेसिकली वन ऑफ माय पीएचडी स्टूडेंट इज करंटली वर्किंग ऑन दैट कि हम जो बायोमास है वी कैन कन्वर्ट इनटू चार एंड देन वी कैन मेक ब्रिकेट्स उसके। तो वो दैट ब्रिकेट्स कैन बर्न स्लोली एंड एफिशिएंटली। सो वो टेक्नोलॉजी भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो एसेंशियली we don't need to utilize the biomass as it is. We can convert into char and then मुझे इंटरप्ट तो नहीं करना है, होना तो नहीं, चलना है कंटिन्यू। अच्छा, and then essentially we can make briquette. तो that briquette अब तो वो बाजार में बिक भी रहे हैं ब्रिकेट। ये जो अक्सर हम बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ब्रिकेट बाजार में अवेलेबल है। तो वो बायोमास से ब्रिकेट बना रहे हैं। तो वो स्लोली भी चलते हैं एंड वो काफी देर तक आपको जो है हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जो द बॉयलर टेक्नोलॉजी शिफ्ट इनफैक्ट इंडस्ट्री तो बाय कर ही रही है। ये ग्लास इंडस्ट्री है या दूसरी जो मीडियम साइज इंडस्ट्री, दे आर यूजिंग ब्रिकेट। तो ब्रिकेट अब एक अंडरस्टूड टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, पीपल आर यूजिंग इट। अच्छा, यस, गैसिफिकेशन जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय बायोमास है, वो बेसिकली हम जो है वो we can do it analogous to the coal gasification। तो कोई बहुत टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है कि बजाय इसके कि गैसिफायर में मैं कोल डालूं या गैसिफायर में बायोमास ब्रिकेट डालूं, उसके लिए सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एंड आल्सो a lot of power plants having coal having a lot of moisture, they are using also biomass, क्योंकि बायोमास relatively जल्दी जल जाते हैं। तो उसकी जो हीट है दैट कैन बी यूज्ड टू वेपराइज दी स्टीम या वाटर जो होता है उसको वेपराइज करने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो एक डिसएडवांटेज था ना, having a fuel having a huge quantity of moisture, वो ओवरकम हो जाता है बायोमास से। So I used to work in Malaysia on a power plant। मैं जौहर में रहता था, जौहर में 2 पावर प्लांट लगे हुए थे सिंगापुर के साथ ही, and they were using a blend of biomass and लो ग्रेड कोल। उनके पास भी लो ग्रेड कोल ही है, सरावक से जो कोल आता है मलेशिया में, वो भी हमारी तरह का ही कोल है। सो एसेंशियली दे वर यूजिंग दैट कोल विद द बायोमास। से फायदा ये होता था कि बायोमास जल्दी जल जाता था और वो मॉइस्चर को वेपराइज कर देता था, तो फिर वो जो कोल जाता वो अच्छा जल जाता था। तो दैट वाज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स है, दे वर यूजिंग इट। तो एसेंशियली टेक्नोलॉजी इज नाउ अवेलेबल, टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड वेरी एफिशिएंटली, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ी सी बायोमास के लिए लैंड, हमारे पास लैंड बहुत है। हम आप देखेंगे, आप कभी भी सिंध में ट्रैवल करेंगे तो हीव्स बड़े बड़े बने होते हैं, ये जो भूसा होता है उसके उन्होंने बनाए होते हैं। तो
स्टोरेज तो हमारे अभी भी हो रही है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन है दैट इज नॉट वायबल है। अब बायोमास की जो ड्राइव मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि बायोमास से बेसिकली हम टावर बना सकते हैं। अगर आप उसको पैरोलिसिस करें तो यू कैन हैव पैरोलिसिस ऑयल, दैट ऑयल can be in the presence of catalyst, essentially at like 500 K we can produce hydrogen gas. So technologically कोई बहुत difficult process नहीं है, it's not very difficult because at 500 K is not a big temperature, but with the use of nickel catalyst we can do that. Or ये available है technology, people are using it, people are making it in a number of countries, although it's not on a commercial scale, but like on experimental and pilot scale ये सारा कुछ हो चुका है। तो we can do it. It's not technological difficult. और जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था कि बेसिकली हमारी अब अंडरस्टैंडिंग रिएक्टर्स, गैसिफिकेशन रिएक्टर्स तारीख अच्छी हो गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है, वी आर एबल टू रन बिग पावर प्लांट वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ रिएक्टर्स। तो वो समझ में आ गया। जैसे रिएक्टर्स है या बबलिंग है या सर्कुलेटिंग प्रोटेक्शन, इसका ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के पास। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी, जैसे मिसाल के पे मैं पहले एटॉमिक एनर्जी में था, कैनूप में था, तो हमें सिखाया जाता था न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाना कैसे है। तो इट वाज लाइक टाइम लगता है समझने में टेक्नोलॉजी को, हैजर्ड्स को, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टीज को। तो इसी तरह हमारे पास जो फ्लोराइज्ड रिएक्टर्स हैं दैट आर यूज्ड इन थर्ड, उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई लोगों को, ये अंडरस्टैंड कि कैसे चलता है, इसकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। प्रॉब्ली इनिशियली हमें सेटबैक्स हुआ था पाकिस्तान में, इसके बाद लाखड़ा वाज वन ऑफ द एग्जांपल। Lakla was a very bad experience we had. It was the first coal power plant we had in Pakistan. और वो अपने चलने के कुछ महीने बाद ही बंद हो गया। वजह ये थी कि हमारी शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं थी रिगार्डिंग our टेक्नोलॉजी, और कोई वजह नहीं थी। बिकॉज के we sent good samples of coal to China और उन्होंने उसी पे डिजाइन करके रिएक्टर भेज दिया। जब हमने अपने जो यहाँ चल रहे हैं जो एवरेज कोल पे चलाया, तो वो बेसिकली जितनी भी ऐश थी, ऐश इज लाइक मिनरल्स, तो वो जो वो मेल्ट हुई ना ऐश सारी, तो वो नीचे ड्रिप हुई सारी, तो वो ग्लास होता है एक्चुअली। तो वो ड्रिप हुआ तो नीचे सारी नोजल बंद कर दी। एंड इट टुक लाइक मोर देन 6 months कि उसको ग्लास को तोड़ना आसान थोड़ी होता है। ग्लास जब किसी नोजल में घुस जाए तो उसको निकालना कोई आसान काम थोड़ी होता है, ग्लास को तोड़ना। सो इट टुक अ लॉट ऑफ, देन लोगों को समझ में आया कि आपके पास जो कोल है आप उसी पे डिजाइन करें, कोई जरूरत नहीं है बाहर इंप्रेस करने के लिए कि सबसे बेस्ट सैंपल भेज दिया अपने, तो वो भेजें जो है एक्चुअली। देन वो फिर उसको रीमॉडिफाई किया गया। So what I'm trying to say is now, because we have good understanding of using that technology, बायोमास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप कोल करते हैं, मैंने बायोमास डालना है इसके अंदर, एंड वो बायोमास जो कि मैं डंप कर रहा हूँ, जाया कर रहा हूँ, जला रहा हूँ, आई कैन यूज इट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, तो नेचुरल गैस के मुताबिक जैसे बात की कि भाई अब वो हमारी बायोमास से हम बेसिकली गैस भी बना सकते हैं, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बर्नेबल गैस, so we can use it as a fuel also, ना। तो वो भी in the process मिल जाती है। बायोजनरेशन है, जैसे भी बात की, मार्केटिज्म है, although it's a slow process, but of course some hydrogen हम always बना सकते हैं for बायोजनरेशन से। सोलर से भी है, बात हुई थी सोलर पे भी, लेकिन सोलर दायरा हमारे यहाँ इतनी भी वो नहीं है, क्योंकि सोलर से आप पावर प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। विंड भी सिमिलरली हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, फ्यूचर हाइड्रोजन पे बात कर सकते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन की कभी समझे, हाँ जी, हमें हमारे बच्चों को तो नहीं पता, अखबारों में डालते हैं, बड़ों को भी शायद कुछ पता है कि जी हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है या घी बनाने में इस्तेमाल होता है। बाकी शायद हमें जो पावर प्लांट्स है उन्हें पता है कि जी जनरेटर कूलिंग में वी यूज हाइड्रोजन, बट लाइक इवेंचुअली देन वी डोंट हैव द क्या हमें करना क्या इसका। तो वो जरा अगर एक गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप में से कुछ लोग बैठते भी हैं, मेरा भी कभी कभी इत्तेफाक होता है, मुश्किल लोग होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की समझ नहीं होती। सर आप भी मिनिस्ट्री में बैठते हैं, वहाँ लोग, उनका माइंडसेट अलग होता है। दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड के बाहर से प्रोजेक्ट कैसे आ सकता है, चाइना से कैसे आ सकता है, कितने टूल लग सकते हैं, कितने टीडीए बन सकता है। दे आर मोर इंटरेस्ट। मैं कितने हाथ से बैठा हूँ 2-4 बार, तो मुझे मैं तो इसमें होमवर्क ही करके नहीं गया। मैं तो इंजीनियर हूँ, तो मैं तो टेक्निकल बातें करता था, टेक्निकली प्रेजेंट करता था, वो देखते रहते थे। फिर वो किसी को कहते थे यार आगे मुझसे मिलो मेरे बॉस को, तो वो कहता था वो तो कुछ और बात कर रहे हैं, इसमें हमें क्या फायदा होगा। तो एनीवे, लेकिन हम इंजीनियर्स वी हैव टू, इवेंचुअली टेक्नोलॉजी लर्न करती है ना, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट
कि हाउ कैन वी मेक अ कमर्शियल वायबिलिटी, बिकॉज हाइड्रोजन यूनिट्स हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, शेल, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी नाउ, ठीक है ना, रोल्स रॉयस है, ये सारे लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, फ्यूचर तो है, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड कि भाई हाइड्रोजन को भी टैप करना है हमने, इज वन ऑफ द एनर्जी मिक्स बनाना है, वी कैन नॉट रिलाई अ लॉट ऑन लाइक ऑयल एंड गैस एंड ऑल दिस थिंग, डिप्लीट होती है वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी बिल्कुल रिप्लेस हो जाती है। कल इत्तेफाक से रिसिफाई यूनिवर्सिटी में हमने कुछ ऑटोमोटिव के एक्सपर्ट्स को बुलाया था, तो वहाँ भी हमारी काफी सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग चेंज होना शुरू हो रही है, कि लगता है कि आइंदा 10 सालों में बहुत बड़ा हमारा सेक्टर जो है वो ऑटोमोटिव का वो शायद ईवी पे चेंज है। तो अगर ईवी पे चला गया तो गैस प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस वैसे ही हमारे गैसोलीन की प्राइस वैसे ही कम हो जानी है। तो लाइक तो ये शिफ्ट आता है एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। ये चाइना अगर इतनी मार्केट में गाड़ियां ईवी सस्ती बना के फेंक रहा है तो वो आएंगी, इवेंचुअली पीपल विल यूज इट। अगर कोई 40 लाख की आपको गाड़ी मिल जाती है तो व्हाई डोंट यू बाय ईवी? आप कहें 40 लाख की ठीक है, तो आजकल तो ऑल्टो भी को 30 लाख पे पहुंच गई है। तो लाइक कमर्शियल वायबिलिटी बन जा रही है, आहिस्ता से बन रही है कि ईवीज आएंगी तो वी नीड टू थिंक बिट फॉरवर्ड कि भाई हमें आगे क्या करना है। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन व्हीकल्स मैंने आज से कोई 20 साल पहले फ्यूल सेल पहली कार देखी थी सिंगापुर में चलती हुई, वहाँ कोई 10-15 गाड़ियां चलाई थी उन्होंने, तो सब देखते रहते थे, रोड पे से लिखा भी होता था फ्यूल सेल। तो प्रॉब्ली इसकी तादाद अब बढ़ गई होगी वहां तो बहुत ज्यादा, मैं काफी अर्से सिंगापुर नहीं गया, लेकिन एनीवे दैट विल बी अ रियलिटी वेरी सून। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत कामयाब हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल बसेस में ये हो सकती है, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव ऑप्शन है हमारे लिए कि वी हैव अबंडेंस ऑफ बायोमास, वी हैव ह्यूज बायोमास रिसोर्स अवेलेबल दैट इज नॉट यूटिलाइज्ड। इवन इसका हम कोई 10-15% इस्तेमाल कर लें तो वी कैन मेक ह्यूज। और वही बात है कि जैसे अभी सर ने भी कहा, डॉक्टर नसीम ने, के रिसर्च यूनिवर्सिटी सबसे पहले यूनिवर्सिटी डिमॉन्स्ट्रेट करती है। रिमेंबर आज से 22 साल पहले 24 साल पहले मैं अपने प्रोफेसर की लैब में बड़ा अच्छा काम करता था, मुझे पता था कि हाइड्रोजन बना के मैं स्टोर बनाता था, फिर उसको हम टेस्ट करते थे, इसके FTIR में चीजें दिखते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, गैस क्रोमेटोग्राफी से चीजें देखते थे, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हुई ना पाकिस्तान आके। लेकिन ये रियलिटी है, वो चल रहे हैं आगे, लोग चल रहे हैं, रियलिटी को फॉलो कर लेंगे, चलें कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा विद दैट। तो देयर इज अ फ्यूचर ब्राइट है हाइड्रोजन का, एंड पाकिस्तान में गुड पोटेंशियल अगर हम बायोमास इस तरह की और चीजों को करें, और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर प्रॉब्ली से बेनिफिट कर सकता है। तो मैंने ज्यादातर ये कुछ रेफरेंसेस यूज किए हैं, मेरा अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कम है इसमें, ज्यादातर रेफरेंसेस हैं जिनसे मैंने किया है। और थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेशेंट लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच। सर जरूर। आपकी जो गैस फायर जी मैं बताता हूँ, हाँ वही तो सबसे काम की चीज है। हाँ नहीं छुपाना क्या सर, वो तो उसमें बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। करें, मैं तो लोहार आदमी, इंजीनियर हूँ मैं तो शौक ही है बना के रखा हुआ है। ये तो गलती से मुझे सर ने डीन बना दिया, मैं टेक्नोलॉजी का आदमी, सर के साथ काम किया मैंने कोल पे, इनका गैसीफायर बनाया था हमने मुल्तान में जाके, जबरदस्त। इसमें देखिए हाइड्रोजन तो एक पहलू है, बिल्कुल सारी चीजों से लेके आ रहे हैं ना, ऊपर जहाँ जाते हैं वो है सिंथेटिक गैस, ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो एक इंस्टीट्यूट जब एक जर्नल सवाल है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ये जो आजकल बहुत हॉट है कि इसमें एक गवर्नमेंट टकराव है, राइट, तो क्या हम क्या करेंगे अगर ये सब बंद करते हैं? तो उनके जो इश्यूज है उसने तो बंद किए हैं, कुछ कैपेसिटी चार्जेस ले रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे जो कि उनकी लिमिटेशन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये सिंथेटिक गैस पे अगर गैस टरबाइन गैस मौजूद है, ये कंबाइंड साइकिल आपका पूरा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। ये साइकिल मुझे पता है कि ये बहुत कामयाब साइकिल, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जजान सिटी में रेजिडेंस नहीं मैं खुद मौजूद था, 4000 मेगावाट का जजान सिटी को पूरा प्रोवाइड किया है, 10 गैस टरबाइन ऐसे कंबाइंड साइकिल दिया है। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारा जहाँ आपने बात शुरू की कि बायोमास और ये सारी चीजें हैं, हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हमारे ऐसे प्लांट जो कि बिल्कुल आइडल ना हो जाए, उनको हम डिफरेंट फ्यूल देने,
ठीक है, सिंथेटिक गैस होता है मेरे साथ में, जैसे एविएशन, बाद में अगर टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है या कॉस्ट नॉर्मल तक में पैसे आ जाते हैं कि हम क्लियरली हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें, सो मिल जाए, लेकिन अभी हम ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपके 2-3 सवाल है जी, ये रिकॉर्डिंग बोलिए आजकल से बोल देता हूँ। आपको पता है कि हमारे जो ज्यादातर आईटी चीजें हैं हमारे को सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आगे ना तो एक्सपीरियंस भी शामिल है। और वो बहुत बड़ा शो अच्छा, लेकिन सब नहीं बताऊंगा भाई सुने और उसका सारा जो पैसा है वो एसपीटी पे हुआ मैं आपके टेक्निकल सवाल में नहीं कर समझ गया मेरी बात ठीक है तो ये सारा बोल दिया और समझ गया बात डॉलर में पेमेंट होती है ठीक है अब जब ये बात करें, ठीक है अब मैं वो आप बोलूँ अब वो आईपी बिजनेस वैसे सब मुसीबत है ये एग्जिस्ट करता है ठीक है, जिस एग्जिस्ट करता है ये एग्जिस्ट है ये बस करता है, ये क्लीन अप साइकिल बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना सो अच्छा जो मेरी कुछ लोगों से एंग्रो में बात हुई जो थोड़ा सा बहुत आगे सोचते हैं उन्होंने कहा कि जी हमें ये एनवायरमेंट वाले ना 5-7 साल के बाद बहुत तंग करेंगे तो अपने बहुत सारी कार्बन अच्छा वहां भी फील होना शुरू हो जाते हैं वेरी गुड था क्योंकि वहाँ एयर मूवमेंट जरा कम है तो आपको महसूस होना शुरू जैसे ही आप पावर प्लांट के करीब जाते हैं ना आपको स्मेल शुरू हो जाती है तो 5 साल बाद वो ज्यादा तंग करेंगे वो कहेंगे कि जो जो अवेलेबिलिटी है जो भी जो हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं थोड़ा सा जो अनबर्न है वो भी जा रहे हैं इसके साथ तो तंग करेंगे तो उन्होंने तो पहले प्लान बना दिया कि दे विल गो फॉर दिस काइंड ऑफ पहले वो गैसिफायर बनाएंगे यानी कि दे विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग हॉट गैस दे विल यूजिंग गैसिफिकेशन करेंगे उसमें करना कुछ भी नहीं है उनको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम की थी all engineers we understand that when I want to oxygen come I am not doing combustion I am doing gasification so I'll get gasifier means उसको clean up करना होगा because से fly ash होती है बाकी चीजें होती है वो क्या की जाएगी तो ये साइकिल बन जाएगी अगर इसकी जरूरत होगी तो वो बिल्कुल हो गया था भाई वो डस्टिंग हो जाएगी ठीक है अब ये तो आना ही आना ये तो बनाना ये मौजूदा ये बनाने हैं ये प्लान है ये और आपको मौजूद भी है ये इनके प्लान में है जैसे आपने बताया निजाम में Only practice what is very mushkil and they have in their mind. In after next 5 years, they have enough. जो earn कर लेंगे पैसे, they will bust some money here. उसमें बंद करने वाले में बात ठीक है ना? अच्छा वो बात बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया हमारे बहुत सारे प्लांट हैं जो बंद हैं. ठीक है एग्जाम्पल इवन आप लोग कैनो की सेकेंडरी साइकिल बिल्कुल ठीक है. कैनो की जो है ना वो वाली साइकिल है जहाँ वो लगा हुआ है या सेंसर है इंडस्ट्री तो यहाँ से जब मैं कमीशन को हमने टीओ को प्लेस नहीं हाइड्रोजन दिखा वो बिल्कुल नया चमकता मामले टेंडर से बना दिया था और पैसे लगे थे उसको तो वो विजिबल है अब मैं तो इसे कहूँ कि नहीं कि मैं आपको स्टीम नहीं दे रहा न्यूक्लियर से ये मुझे सिर्फ दे दो फिर बड़ा टर्बाइन दे दो नीचे वाला ऐसा दे दो चल जाए इसका बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि अवेलेबल है इस तरह के जिनका जो बॉयलर वाला पार्ट खराब हो गया है उनको हम प्लेस कर देंगे तो ये हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कोई the economics govern everything there are factors that come with that आप प्रेजेंटेशन में मेरी कमेंट्स है कि डॉक्टर जमील I mean got Japanese involved in Tharapur. I remember first नेडो ने एक स्टडी की उसमें वही लिक्विफैक्शन का उनका वही था कि यूरिया बनाना है हाइड्रोजन केमिकल बनाने सारा काम था उसके बाद एक और आई थिंक जे कोल वो सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि कोल का ही करता है उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी उनका विकेट बना यानी जैसे उसमें ज्यादा है वाटर ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है उन्होंने उसको विकेट बना के यहाँ आना है यानी आप कराची और भी करें अगर कराची में हम जितने पावर प्लांट लग रहे हैं उसमें इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट हो रहा है तो वो रिप्लेस कर देता मेरा ख्याल ये है कि हमको को अब सोचना चाहिए फुल प्रेजेंटेशन by you and there are lots of information and knowledge we should come up with a more efficient and effective utilization of our coal. yes इसके ऊपर एक होना चाहिए जिसमें ये ब्रिकेट का भी जैसे जे गोल का भी स्टडी
तस्किया किया जाए और वो भी किया जाए जो नेडो ने किया है लिक्विफेक्शन का एंड ऑल अदर्स लाइक दिस अ ब्रिलियंट आइडिया कि मैंने एक पीटी कर रहा है प्रोवाइडर है, हमने कर लिया काम सारा, वी हैव हमने बायोमास को हमने इसको बेसिकली थोड़ा सा लाइक 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हमने 4 में कन्वर्ट किया एंड वी आर कंपोस्टिंग इट। तो वो जो था ना कि जो इनिशियल का लिविंग मटेरियल होता है जो बहुत ज्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है वो एलिमिनेट कर दिया हमने। ये ज्यादा एफिशिएंट है। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि कैन बी यू नो we can transform our shortcoming into our strength। ये एक आइडिया है। अब इसमें लेकिन जैसे उस कोड के अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा है, आपके स्लाइड में कहते हैं उसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। We get the sulfur out of that. We make sulfuric acid on a commercial basis and we start exporting that. It's a very expensive। वो टेक्निकली बन सकता है क्योंकि सल्फर है ना वो तो उसके अंदर इम्बेड है, मतलब वो जलेगा। तो जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट सल्फर डाइऑक्साइड बनाना ही ये सल्फर एक्सट्रैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल बेस्ड केमिकली कंबाइंड है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोल में सल्फर निकाल रहा हूँ। सल्फर दो तरीकों से उसमें एक पॉसिबल है कि वो दूसरी जगह वो केमिकली बना जब विकेट बनाएंगे तो उसको क्या वो ये किसी साइड पे करना है काम, हम उसमें ना चूना डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। उससे क्या होता है कि चूना जो होता है ना वो रिएक्ट करता है इसके साथ, तो एसेंशियली वो फिर वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो वो तो किसी में बना रहा है तो ये प्रॉब्लम भी करते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं इसके अंदर, वो ताकि सल्फर डाइऑक्साइड की कम हो जाए। बाकी जो फ्लैश होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, कुछ फटी मिलती है ज्यादा, मतलब कुछ इसके बारे में चला रहे हैं क्या है सब बात चला रहे हैं, रिकमेंडेड नहीं है, यू शुड हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आपने कहा कि हाइड्रोजन नेवल की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा एक पोटेंशियल है आपकी लास्ट टाइम में, इसकी कॉस्ट कितनी है? क्योंकि अभी तक इसकी बाय एडेप्टेशन की वजह इन लाइक ग्लोबल लेवल पे क्या है? एक तो ह्यूज प्रोडक्शन नहीं है ना, डेंसिटी कम होने की वजह से कंप्रेस करना पड़ेगा, वो कंप्रेसर वर्क बहुत ज्यादा है इसमें क्योंकि डेंसिटी ऑलमोस्ट 1/3 एज कंपेयर टू द अदर नेचुरल गैस। तो गैस का मतलब आपको 66% मोर कंप्रेस करना पड़ेगा इसको, तो उसमें कॉस्ट है, कंप्रेसर की एनर्जी ड्रिवन कॉस्ट है। जब कंप्रेस करेंगे फिर शायद ब्लास्ट होने के भी चांसेस नहीं, वो तो नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, मतलब जैसे सीएनजी हम जाते हैं पेट्रोल पंप में, खतरा नहीं होता कि धमाका होगा कभी, हालांकि वो भी अच्छी पता नहीं कितने मेगा पास्कल पे होती है। तो वो तो है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है, लेकिन सिर्फ वो ये कि अभी इतनी गैस ही नहीं है जिसको कंप्रेस करें, और देना या तो बल्क में गैस हो। बायोगैस हमारे पास भी है और हमारे दुनिया में भी और जगह बहुत है। हाँ सारी बात की है। तो हम अभी तक ग्लोबल लेवल पे जब हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन भी डिस्कस करते हैं तो ईवी तो आ रही है, लेकिन हाइड्रोजन लेवल में थोड़ा सा वो पीछे मतलब है कि वो की वजह से हमारा मुल्क में ना वो चेंज हो रही है। जर्मनी में पहले उनका खराब यूरोप में खास करके स्पेशली जब दे वर वर्किंग ऑन बायोमास अबाउट, फिर वो शिफ्ट करने का नहीं कि हम तो विंड पे चले जाएंगे, तो वो रिन्यूएबल में विंड और उधर ज्यादा चले गए, तो ज्यादा प्रोडक्शन से फिर होना शुरू हो गई। ये थोड़ा पीछे रह गया प्रोजेक्ट है वो उतना ज्यादा ऐड कर दो। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ना, जैसे मैंने कहा कि इसको हाइड्रोजन की जो चीज है, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी यूज करती है और यूज कर रहा है, ठीक है। अच्छा चीज जो ड्राइव कर रही है उसको क्या दो चीजें कि जो गाड़ी के अंदर जो मैटेरियल टेक्नोलॉजी है जो उसको चाहिए सेफ्टी और दूसरी चीजों के लिए, एक तो वो एस्पेक्ट इकोनॉमी है, स्पीड है, डेवलपमेंट है, फ्यूचर की सिस्टम कॉस्ट है, ठीक है, उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसिव मटेरियल यूज हो रहा है, वो उतना सस्ता नहीं है। फिर दूसरी चीज क्या है मकसद होता है कि हाइड्रोजन कंप्रेशन चल गया, ठीक है, जो भी आपका हाइड्रोजन स्टेशन होगा आपका फिर एक सर्टेन लेवल है, कंप्रेस हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस करके वहां डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वहां तक पहुंचाना, प्रोड्यूस की वहां से वहां तक लाने लेके जाना, ठीक है, ये सारी कॉस्ट। तो यही वजह है जो उन्होंने पहले प्रेजेंटेशन दी थी कि अगर हम हाइड्रोजन सस्ती प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाए, जब हाइड्रोजन की कॉस्ट कम होगी इस तरह, तो फिर इन टेक्नोलॉजीज की वायबिलिटी बढ़ेगी और फिर आप ट्रांसपोर्टेशन ना पता नहीं सॉरी वो जा रहे हैं तो आ जाए तो मैं जवाब दूं इसका।
देखिए थर्ड के यूटिलाइजेशन का एक और मसला है कि खाली माइनिंग हेड को इस्तेमाल करें जो आजकल हो रहा फॉर जनरेशन ऑफ पावर, या इसको ट्रांसपोर्ट करें। अब ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है। आप मुझे कोल फॉर्म में करें फॉर्म में करें, हमारी नजर में एनर्जी ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंट गैसिफिकेशन में है जी। अब वो प्रपोजल ये है कि रेलवे लाइन डाल दी, वैसे ये रेलवे चल रही तो ये रेलवे लाइन डालना अनशन समझ ओके। अच्छा फिर आप क्लाइमेटिकली देखें, अगर बाहर से पानी हेड से उठा के कोल को यहाँ कोल जलाएंगे तो क्लाइमेटिकली तो अगर गैस को दिया है तो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का इम्पैक्ट कम होगा उसकी वजह से। तो हमारी नजर में मुस्तकिल ये हम इनको जो बहकाते रहते हैं इनको कहना है कि यार इसको वही गैसिफाई करो, क्लाइमेटिकली तुम्हें सूट करेगा, इसे जो कुछ भी होगा उधर चली जाएगी, इंडिया की तरफ चली जाएगी तो हमारे गैसिफिकेशन में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो उसके बाद जाहिर है जैसे आपने कहा हमारे स्पीकर ने कि उसकी डेंसिटी कम है कंपेयर टू नेचुरल गैस, आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्रेशन की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट निकाल ले, देख लेंगे कितना बड़ा है, उसके अलावा वैल्यू भी कम है कंपेयर टू नेचुरल गैस। तो डजंट मैटर, मसला सारा ये है कि अगर ये वायबल आपको नजर आता है, particularly in a case when there is complete depletion of natural gas, what will happen to an urban center like Karachi? Can you imagine what would happen? No. आपसे एक और सवाल है। तो नेचुरली ऐसे अल्टीमेट सिनेरियो को अगर आपको डील करना है तो आपको कम से कम प्रीएम्प्टिवली कुछ सोच तो लो, ना काम का तो सोच तो लो कम से कम। अगर ये हुआ तो हम 2-4 साल लगेंगे इसमें करने के लिए। लेटेस्ट इसका ये सर, जैसे आपने कहा ना कि जापान सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से तो when we are thinking why we shouldn't think big, तो हम भी उस कॉन्सेप्ट को क्यों न लाए कि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके लिक्विफाई करके लाए। तो ये भी आइडियाज हम when we are thinking big, when we are thinking we should think big, तो ये आइडिया भी फ्लोट करने में क्या बुरा है। तो कहते हैं आपका ख्याल ये कि हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से नहीं हम कह रहे हैं कि हम अपने गोल है उससे उसको लिक्विफाई करें और कोई लाए एक्सपोर्ट भी करें और उसको एक्सपोर्ट करें। अब उसमें टेक्नोलॉजी कहाँ तक डेवलप और किस हद तक हम कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू नो। सही है, लेकिन हमारे नजर में जब हम डेप्थ में नहीं जा रहे इस मोमेंट के ऊपर, हमारे यहाँ से एनर्जी का एक्सपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉट वायबल। ये समझ जाना इस बात को बने। क्वेश्चन वो गैस को हो, कोल को, या the only viable power that is being generated at this moment is nuclear. Don't forget. The only. तो मैं कोई कुछ और है, मैं ये करूँ कि उस गैस को आप लिक्विफाई करके ट्रांसपोर्ट करेंगे, वो गैस वो जितनी आपकी कॉस्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन लगेगी उससे 2 to 3 times लगेगी लिक्विफिकेशन पे बिकॉज ऑफ -250 सेंटीग्रेड। -250 सेंटीग्रेड पे जब हम जाएंगे और फास्टिंग करेंगे तो इसी के लिए क्या है, जो टेक्निकल सोल्यूशन है, मीथेन को हम इसके साथ कंबाइन करें, कोई गैसेस को कंबाइन करें सेफ्टी फैक्टर्स के लिए। सेफ्टी भी अगेन इज अ पिक्चर। अब होता क्या है इसके अंदर हाइड्रोजन क्यों, व्हाई नॉट अ मीथेन, व्हाई नॉट अदर सोर्स। जैसे सर ने कहा हाइड्रोजन इस वजह से कि हाइड्रोजन की कंबशन के बाद हमारा वाटर बनता है
और CO2 नहीं बनते। ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है दैट इज ऑन, इसमें कोई टेक्निकली कोई हिच नहीं है। हाइड्रोजन कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस and particularly utilization of the existing pipeline network. That's one of the issue. Always. Whether hydrogen will need another pipeline or अभी जो नेचुरल गैस हम कर रहे हैं CNG भी होता है, तो वो भी तो शिप्स में आ रहे हैं ना। अब वो लिक्विफाइड करेंगे, आप उसको शिप लाते हैं, फिर आप उसको रिगैसिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो when you are doing this thing for natural gas, I mean, why can't we think hydrogen to be treated in the same manner? I mean, technically there must be many challenges, and I mean, I'm not an expert, but concept-wise, I'm floating this idea. Even we can do it for natural gas, why not for hydrogen? This is my point. प्रोटेक्शन या हाइड्रोजन की रिसर्च के अंदर बहुत बड़ी जो चैलेंज है वो स्टोरेज एंड लिक्विफिकेशन की चैलेंज, तो इस पर बहुत ज्यादा काम है इस हिसाब से। मगर जो सिनारियो पाकिस्तान का है वहाँ पे एनर्जी कंसर्न है। हाइड्रोजन क्योंकि वो CO2 को रिमूव करना चाहते हैं, अगर हम क्लाइमेट चेंज और इस पर्सपेक्टिव से इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान का पॉइंट, तो हम 5th नंबर पे हैं CO2 प्रोडक्शन के अंदर जो टैक्स आ रहे हैं, और प्रोडक्शन के ऊपर वो 80 नंबर पे 82 नंबर पे। इसकी वजह से अभी एक बात हुई थी वो यूनिवर्सिटीज को इस एरिया में रिसर्च करनी चाहिए ये है, तो जो यूनिवर्सिटीज के पास जो रिसर्च की जो फंडिंग्स आती हैं वो एक कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल से आती हैं, और वो कॉल फॉर रिसर्च प्रपोजल जो है वो ड्राइव होता है फ्रॉम HEC तो फ्रॉम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो एक आई थिंक एक लार्जर स्केल पे पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, क्योंकि ये 3-4-5 एरिया है जिन पे हमारी अगले 2-4 साल की रिसर्च होनी चाहिए, एंड दैट इज गोइंग टू ड्राइव द रिसर्च फॉर द यूनिवर्सिटी। जो सबसे बड़ा हमें ड्रॉप्स नजर आता है जो मैं करेक्ट कि हम रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमने ये नहीं देखा कि रिसर्च को थीमेटिकली प्रमोट किया जाए या वन ऑफ रिसर्चर के बेसिस पे फंडिंग की जाए। फंडिंग हो रही है वन ऑफ रिसर्च बेसिस के ऊपर, वो तो जाकर चला जाके खत्म हो गया। अगर थीमेटिकली हो तो Yes, I'm Wang Haitao on behalf of Professor Zhang Zuoyi. I'm online. Okay, great. Sorry, we had to reschedule your presentation. We had Dr. Who was supposed to talk after you. We requested him to talk before you, Dr. Ahmad. He's finished his presentation. I'll just request you to join in a few minutes. How are you doing otherwise? Yes, it's okay for me. No, I'll request you in 5 minutes time to join in. I just want to know, which university are you from? I'm sorry. You are also in the same university? Right. We were waiting for you, so we started off our team. Everybody's coming back. Please call everyone. Okay. Since when are you doing your research in this area? I mean, for me, For how many years have you been doing research in this area? nearly 20 years. 20 years. Good.
And you've got some patents on this? You've got some patents? Patents? Some design patents? Actually, our institute have patents on the nuclear reactor technology. Okay, nuclear reactor technology. Yeah. And that hydrogen is part of that, those patents. And which city are you from now? Which city are you living in? Oh, I'm from Beijing. You're from Beijing? Yeah, I'm from Tsinghua University. Tsinghua University, okay. Yeah. That's a big university. How many students are there? How many students? Oh, I think the graduate students plus undergraduate students, we have nearly 50,000. 50,000, that's a big university. Yeah. That's a big university. Top 20. Top 20. Top 20? Top 20. US qualified. Okay. We have, I think we have around 15,000 undergraduate students. Okay, that's big, big. I'm also very happy from Tsinghua University. You also from Tsinghua University? Yeah. We have a doctor from Tsinghua University in Pakistan, right, sitting here. One of the participants here. So which department? Which department were you in? School of Environment. School of Environment. Environment. Tsinghua. School of Environment. Yeah, School of Environment. Right. We have participants back here. I'm privileged to welcome you to present us on the green hydrogen project of yours. We are ready, all ears for you. You have all the time. Kindly start your presentation. Yeah. Screen share kar diya? Wait a minute. Can you see my screen? Yeah, we can. Yeah. Full speaker. दिखा लो. You can start now. Can I start? Yeah, you can. Oh, okay. Okay, thank you very much. So, dear colleagues, ladies and gentlemen, good morning. I'm sorry for the inconvenience. I'm sorry for the Zoom connection issues for this delay. My name is Haitao Wang. I'm from INET of Tsinghua University. I would like to begin with my apologies on behalf of Professor Zhang Zuoyi. Professor Zhang was originally scheduled to be here, but he had to make a trip to the nuclear project site on short notice. Unfortunately, this means he won't be able to attend and present as planned. Thank you for your understanding. And I have the honor to deliver the speech on his behalf to share with you the progress of China's HTR-PM project, and which is the world first generation 4 high temperature gas cooled reactor nuclear power plant, and how the hydrogen production with this nuclear reactor would be a clean substitute for the fossil energy in China. I know the topic of this symposium is on green hydrogen. Maybe for nuclear is kind of a pink hydrogen. I have the two topics to cover, but before that, I would like to give a very brief introduction of my institute.
Its name is the Institute of Nuclear and New Energy Technology. It is also called INET. INET was established in the late 1950s, early 1960s, when China launched the nuclear program. Our university is doing is research and education issue in the field of nuclear science and technology. Today, INET is the largest under the China education system. It is under Tsinghua University, and Tsinghua University again under the Ministry of Education of China. Our institute has about 400 faculty and staff members, and for the students, we have over 300 postgraduates. We don't have undergraduate students, but we do have master and PhD students. Over the years, we have built and operated and are still operating test reactors and a relatively large number of laboratories. Our campus is about 50 kilometers northwest of Beijing downtown area. We have 3 test reactors in the campus. The swimming pool reactor for shielding test was built in 1964. This is not the first reactor in China, but the first self-designed reactor. The water-cooled heating reactor with integral design principle, meaning that the steam generator and the reactor are in the same vessel. Today, you can see many water-cooled SMRs are using this kind of concept. And we started that development in the 1980s. The 10 megawatt high temperature gas cooled test reactor, also called HTR-10, was built in 2000. I will get back to it later on. In addition to the test reactors, INET also led the research, development, and design work on a high temperature gas cooled reactor demonstration plant called HTR-PM. Okay, now let's move to the first topic, the HTR-PM project. The high temperature gas cooled reactor, also called HTGR or HTR, this reactor is considered as one of the generation 4 reactors. It uses helium as coolant and graphite as moderator. The fuel is designed with several ceramic coatings in order to work at the high temperatures. This reactor is attractive because of its high temperature capability. Its core outlet temperature could be 700 degrees C and even higher. As a comparison, the core outlet temperature of the pressurized water reactor is around 300 degrees C. The high temperature heat or steam can be used for many industrial applications. The modern HTGR is so-called modular HTGR. With its inherent safety feature, this reactor is considered to be core meltdown free. Therefore, technically, it is possible to simplify the siting and the licensing work. The HTGR has over 50 years of the development history. Several test reactors were successfully built in the 1960s. Then it moved to the large demonstration plants. The concept of modern HTGR was proposed in the 1980s with the inherent safety feature and a modular design. A lot of research and development work has been done for this concept. However, only 2 test modular reactors were built. The one is HTTR in Japan with a prismatic core design. Another is HTR-10 in China with a pebble bed core. Today, there are several very active designs of the demonstration plants all over the world, like the XE100 in US and GT-HTR-300 in Japan. There's only one commercial demonstration plant put into commercial operation in China last year. The HTGR development in China, most of the work has been done by Tsinghua University, has undergone several important phases. In the 1980s, we were mostly focusing on the research and the development of key technologies. And then we built a test reactor called HTR-10. This test reactor was built in the 1990s. And following that, we successfully initiated the project of
constructing an industrial demonstration plant called HTR-PM. And after that, we expect to have more commercial plants. HTR-10 is a 10 megawatt pebble bed modular HTGR. Its core outlet temperature reaches up to 700 degrees C. This reactor can do the electricity and heat cogeneration. The construction work started in 1995. The reactor reached the first criticality in 2000. The purposes of building this test reactor are to get the knowledge of know-how, to demonstrate its inherent safety using the real reactor, and to establish research and development facilities accordingly. Several safety tests have been done with this reactor. The most important one is the loss of forced cooling plus no action of the control rod. As you can see in the bottom of the right pictures, when the helium circulator is shut down during the normal operation, the reactor lost forced cooling. Then due to the inherent safety features, the reactor shut down itself automatically without any intervention of operators, and the decay heat is removed in a natural way with no electricity, no emergency cooling required. The next step following HTR-10 is a commercial demonstration plant called the HTR-PM. The plant has two pebble bed HTGR modules coupling one steam turbine. Each reactor module has a thermal power of 250 megawatts. The core outlet temperature is 750 degrees C. The purposes of constructing this demonstration plant are to demonstrate inherent safety with a real plant in the industrial scale, its economic competitiveness, the use of proven technologies, and its modularization. The plant is located in Weihai City, Shandong Province of China, which is a coastal city in East China. Three major organizations are involved in this project. China Huaneng Group is the owner and operator. Huaneng is one of China's largest electricity generation companies. China National Nuclear Corporation, CNNC, which is the leading company in China nuclear industry, is the EPC contractor. Tsinghua University, we do the research, development. We also design NSSS components and systems like the reactor pressure vessel, the fuel element, the reactor internal, the steam generator, and the helium circulator. Several milestones of these projects. In 2006, it was listed as one of the top-level state projects. At the end of 2012, construction work started. In 2016, fuel production officially started. In 2021, construction work completed. The first fuels were loaded. The first criticality was achieved. And for the first time, it was connected to the grid with one module. In 2022, both modules reached initial full power and connected to the steam turbine together for power generation. At the end of last year, after safety demonstration tests were successfully done, HTR-PM was put into commercial operation. As you can see, we experienced some delay. It is very typical for the first of the kind unit. The first AP1000 and the first EPR in China experienced 10 years of construction also. This slide shows some progresses during the construction, like the first concrete pour in 2012, civil work completed, 2015, first reactor pressure vessel arrived on site, 2016, first steam generator, the main control room was ready, and the manufacturing of the fuel elements. This is an overview of the plant. The right side is the nuclear island, including the reactor building, the fuel building, the auxiliary building, and the electric building. The left side is the turbine building. Before the commercial operation, two important safety tests were performed
on the 2 reactors of HTR-PM nuclear power plant in August and September of last year, respectively, in order to verify the inherent safety. The tests are called loss of cooling tests. From the right figures, we can see that for each reactor module, when we cut off the electricity supply to the helium circulator, the helium flow rate in the primary loop dropped very fast. The reactor then shut down itself automatically due to the negative temperature feedback on reactivity, far before the action of the control rod. Actually, the reactor was shut down by temperature feedback mechanism rather than the control rods. And most importantly, the decay heat was removed naturally passing through the reactor core structure in the radial direction. You can see temperatures at different locations of the reactor grew very slowly, reached a peak value, then decreased. All the temperatures are within the safety limit. The test showed for the first time that commercial scale nuclear fission reactors can be cooled down naturally without emergency core cooling systems. We have published a paper to report the 2 safety tests this year. Moving from a small test reactor to a commercial demonstration plant, it is not just a simple scaling up in size. We have to demonstrate performances of the key systems and components in full size at the same helium atmosphere with the same high temperature and pressure. We constructed a 10 megawatt helium test facility in the campus of our institute. Using this facility, we have tested the control rod system, the steam generator, helium circulator, the fuel handling system, and the control room. And we showed these demonstrations to the safety regulators in order to support the regulator's safety review of the plant. Supply chain is one of the key factors to support future deployment of the commercial HTGRs. Through the HTR-PM project, a supply chain is initially established with most systems and components delivered by domestic companies. Like CNNC provided the fuel element, Shanghai Electric Group provided the reactor pressure vessel, the metallic reactor internal, and control rod, Harbin Electric for the steam generator and the helium circulator, China General Nuclear Power Corporation for DCS and simulator. The graphite is by Toyo Tanso from Japan. Now we have 2 domestic companies who are able to manufacture the graphite for our future HTGR plants. As I mentioned, following HTR-PM, we are working very hard to have HTGR for commercial application, either power generation or if the market requires for power and heat cogeneration. The basic idea is that we maintain design of the HTR-PM module unchanged, copy the modules from the number of 2 to 3 and even more to form a big plant. And we have worked out the preliminary plant design for the next step. And that plant, we call it HTR-PM 600S, meaning that it has generating capacity of 600 megawatts with 6 reactor modules in the reactor building. We chose 600 megawatts just in order to match the steam turbine of the same size, which is most popular in China, coal-fired plant. The big plant closely references HTR-PM design. They have the same safety features, the same major components, and the same parameters. Just a recent news from last month, China has approved 5 new nuclear power projects, including 11 nuclear power units. The projects in Huey City, East China's Jiangsu province, is the world's first nuclear power plant that couples the high-temperature gas-cooled reactors with pressurized water reactors, focusing on industrial heating and electricity supply. After completion, the project will provide the large-scale, high-quality, zero-carbon industrial heat to the petrochemical park in Jiangsu province. The second topic is the nuclear hydrogen production with HTGRs.
As we know that the hydrogen is a very promising energy for the future, it is clean. Combustion of the hydrogen only generates water, and there is no CO2 emission. It is also an excellent energy carrier compared with common fossil fuels like the coal, natural gas, and oil. The hydrogen has the highest energy content by weight. Actually, the hydrogen has and there's also a rapidly growing market in the transportation sector to use the hydrogen as fuel to power the vehicles. If we look further, as an innovative option, the hydrogen can be a great potential in the steelmaking industry, replacing the carbon as a reductant of iron to achieve a clean, CO2-free steelmaking technology. Some information about hydrogen production in China. Currently, China is already the world's largest producer and consumer of hydrogen. China produces over 35 million tons of hydrogen in 2022, which amounts to about 30% of the world's total. About 2/3 of China's hydrogen is produced from coal. Natural gas and industry byproducts contributes about one third, and the electrolysis only shares 1%. As you might know, China has abundant coal, but its lack of oil and natural gas. The cost depends on the different technologies, the energy, and the feedstock used. Also, the cost of hydrogen is affected by many factors based on different studies and sources. It is basically about $1 to $2 per kilogram of hydrogen from the fossil fuels like the coal and natural gas, and $4 to $8 from electrolysis. As the investment on the electrolysis is growing very fast in China, we would expect a significant reduction in cost with this technology. In view of the hydrogen as a promising clean energy, China government has published a medium and long-term development plan for the hydrogen industry. The background is that China has set up the dual carbon target, meaning that carbon peaking is going to be achieved by 2030 and carbon neutrality by 2060. In the plan, hydrogen is identified as a key clean energy in the future China in the energy infrastructure. The plan focuses on the development of hydrogen production using renewable feedstock resources, targeting to reach 100 to 200,000 tons per year by 2025, which is actually still a small number comparing with the total production. The plan targets to bring 50,000 hydrogen fuel cell vehicles on the road by 2025, and to build a number of hydrogen refilling stations. Besides transport, the use of clean hydrogen in other sectors is also mentioned, like the energy storage, electricity generation, and industry. In terms of research and development, the plan addresses nuclear hydrogen production technologies and the use of hydrogen in metallurgical processes. To use the hydrogen as a clean energy, you must produce the hydrogen in a clean way. However, today's mainstream hydrogen production technologies emit CO2. One of the popular methods from the hydrocarbons is steam methane reforming. It is kind of a large-scale production method. It uses natural gas as both feedstock and fuel, meaning that CO2 emission happens from the two sources. Another method from hydrocarbon is the coal gasification, which is most popular in China. This method uses coal as both feedstock and fuel, of course leading to the CO2 emissions. The third is electrolysis of water. It uses water rather than hydrocarbons as feedstock. Its total efficiency is not that good,
as there is conversion from heat to the electricity. And the electricity is obtained commonly by combustion of fossil fuel. One attractive CO2-free option would be to do the water electrolysis with electricity from the renewable energy. As renewable energy is distributed, this option is nice for distributed hydrogen production. On the other hand, if we look for the clean, centralized, large-scale hydrogen production, the nuclear would be a substitute for the fossil fuel. We know that nuclear power can provide both electricity and heat with no CO2 emissions. In addition, nuclear can go with large scales in a centralized way. It seems easy for nuclear to couple with mature hydrogen production methods. It can decarbonize the process of energy input. However, it cannot reduce CO2 from the hydrocarbons as feedstocks. Selection of hydrogen production technologies strongly depend on the reactor types. Basically, it is temperature dependent. For the light water reactor, the coolant temperature is about 300 degrees C. For the fast breeder reactor, it can do 550 degrees C. And for the HTGR, it can reach over 700 degrees C. Among different reactors, the HTGR is particularly suitable for nuclear hydrogen production due to its unique features. The first feature is high temperature that makes it capable to couple with some advanced CO2-free hydrogen technologies. For example, the thermochemical method, like the iodine-sulfur cycle. This is a closed cycle with 3 chemical reactions. It only requires water as feedstock and high temperature heat over 800 degrees C as energy input. Theoretically, high temperature heat only means this method has a good efficiency. On the other hand, there are material and manufacturing challenges due to the high temperature and corrosive conditions. I think over the last 20 to 30 years, there has been a lot of work in terms of research and development in this area. And I would say it is now in the phase from the laboratory test to the small-scale engineering prototype demonstrations. Another method is the high-temperature steam electrolysis. This method requires water only as the feedstock, and high-temperature heat and electricity as energy input. Again, there are material and manufacturing challenges with this method. The second feature of the HTGR is inherent safety. With this feature, it is feasible to set up a HTGR plant close to the user infrastructure. If coupling the HTGR with advanced hydrogen production is successful, a 600 megawatt HTGR would help make 1.8 million tons of iron per year with hydrogen as a reductant in a clean way. Finally, I would like to share our view on the future of the hydrogen production with HTGR in China. In order to make that happen under the dual carbon target, it has to be fully CO2-free. That means coupling HTGR with a mature hydrogen production method from hydrocarbons is not a feasible option. Coupling HTGR with low temperature water electrolysis may be an option, depending on the cost of electricity from HTGR comparing with other methods. Actually, according to the government plan, renewable energy would be the main body to provide electricity from the water electrolysis. The best way would be to couple HTGR with advanced methods like the thermochemical method and high-temperature steam electrolysis. However, due to the level of maturity, we would expect that scenario to be in the long term. For the middle term, we think biomass would be an option. The biomass is considered carbon neutral in some sense because it is renewable. When the biomass is burned, CO2 is released into the environment. The plants from the nature take in sunlight and CO2
and make solid materials, leading to a new biomass. Cost is another crucial factor. Coupling HTGR and the hydrogen plant has to be cost-effective, comparable to the coal-based hydrogen plant in China. Nuclear plant commonly has a large initial capital cost and a long construction period. When massive production of the nuclear plant is possible, the cost will be reduced accordingly. For the market, we consider the iron steelmaking industry because hydrogen has a great potential as a reductant to reduce CO2 emissions in this sector. In 2023, steel production in China was around 1 billion tons, accounting for around 50% of the world total. This is a huge market comparable to the electricity generation. To summarize my talk, the hydrogen is going to play an important role in the energy infrastructure of China towards dual carbon goals. The nuclear hydrogen production is considered a clean substitute for fossil fuels in the future energy market. HTGR is particularly suitable for advanced CO2-free hydrogen production technologies. With the HTR-PM starting commercial operation in China, the following commercial-scale HTGRs are coming into reality soon, paving the way to the integration of this technology with the hydrogen plant. Okay, that is my talk. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. We'll have a question answer session now. One by one, we'll have questions here. Please, Dr. Ahmed. Good afternoon. I'm Dr. Ahmed. Can you hear me? Yes. Okay, I have one question. You have developed the HTGR. Of course, many countries have also developed HTGR before also. China has a very good nuclear program. We are running a number of nuclear power plants in Pakistan also. So what is the specific need to develop HTGR? You can still, develop good steam using the nuclear power plant. So why specifically you went toward HTGR? Okay, I think that's a very good question. Actually, as I mentioned, China has a dual carbon target in the long term, meaning the carbon neutrality, carbon peaking, carbon neutrality. So every industrial sector have to contribute to this goal. So in the sector of electricity generation, actually, in the future, the main body would be the renewable energy. And the nuclear power plant, with the light water reactor as the main body, will share a small part of the market. But there's other industrial sectors which is very difficult to do the decarbonization, like the petrochemical park. So the purpose of developing the HTGR is to use the high temperature steam from this technology to provide this steam to the industry like the petrochemical park to further decarbonize, to do the decarbonization in that sector. And the market in the process heat is actually very huge, which is comparable to the market of electricity generation in China. So that is why we developed this technology. I answered. Okay, there's one question. Maybe you are thinking about it. For example, HTGR is compared with the pebble bed reactor. Of course, small modular reactors also in US they are adopting the pebble bed technology. So that is quite acceptable. HTGR design is quite similar to VVR design of Russia. Chernobyl design was similar to that. Of course, you claim that you have done the safety analysis and you feel it is okay, but still there could be some doubt in the international forum that how HTGR is quite similar design with it has graphite as a moderator. Chernobyl also had the graphite as a moderator, which can store energy, and if you trip a plant from the full power, because I'm a nuclear operator, I used to run nuclear power plants. So if you trip from a full power, that could be a challenge, cooling.
Yes, thank you for the question. Actually, in my personal opinion, the modern modular HTGR plant actually is quite different from the VVER in terms of design. I think the only similarity may be the use of the nuclear graphite. Actually, the graphite is used as the moderator for the world's first reactor. And the gas-cooled reactor in the UK is also very successful, which uses the graphite as moderator. So the modular HTGR, from my opinion, actually has a design that the decay heat removal, even in the full power, I'm sorry, not the full power, after the shutdown, the decay heat removal only depends on the solid material properties rather than the coolant. So that means even if the HTGR loses all the coolant, the decay heat can also be removed naturally by heat conduction and heat radiation with the solid materials. And in that case, the graphite plays a very important role because it is a path. The graphite structure is a path to remove the decay heat. Maybe this is, I would say this is a very long story talking about the inherent safety of the, the modular HTGR. Thank you. Thank you. Next question. Yes. Yes, hello. My name is Dr. Jawad Shamsi. How are you? I mean, thanks for the wonderful talk. Yes, please. I'm sorry, it is not clear. Yes. I mean, can you hear me now? Yes, please. Okay. I mean, yes, my name is Dr. Jawad Shamsi, and thank you so much for this wonderful talk. I just have a very small question that in one of your slides, you showed us that there is a 2030 goal and then there is a 2060 goal, right? Just imagining that considering the technological advancements, would it be okay to set a 2060 goal? It's like 36 runs down the road, and you know that what will be the new innovations and technologies? How would it would affect? It would, it totally like nullify. So, what's your thought on this? I'm not sure if I get your question clearly. So your question is about how we achieve the goal of 2060 about the neutron neutrality? Yeah, would it be okay to, okay, so my question is that would it be okay to set up a goal of 2060 because considering that technological advancements, it may be impacted, it may be like totally like nullified. I mean, I know it's a very like visionary approach, and it's good to have a visionary approach, but considering that the rapid advancements in technologies, would it be, what's your thought that how it can be sustainable? This is my question. Thank you. Okay. Actually, this target is set up by the central government of China. From my view, actually, it's a very challenging task to achieve before the year of 2060. Even if we consider the fast advancement of some new technology, advanced technology, I think in China, the situation is that so far the main body of the energy is from the core, because we have abundant core. So it would be very challenging to use the renewable energy to replace the core. I think in the mid to long term, because the renewable energy in terms of electricity generation is unstable. So that means the grid has to be very flexible, and that also requires the nuclear energy to be very flexible. So I would say that is a challenging target. I wonder if there are some emerging new technology happen and be mature and be commercialized. Maybe we can do it faster, and maybe we can do it at least, for example, 5 years before 2060. But I would say that's a real challenge for us. That's my personal opinion.
Thank you, Doc. We have another question. Hi, this is Dr. Irfan Ahmed. Are you hearing me? Yes, please. That's nice. It was a wonderful presentation. We really learned a lot. But I have one thing from the Chinese government policy, actually. You said that peaking by 2030 and then carbon neutral by 2060. So how this will be going with the Paris Agreement and other things? No, I'm sorry, I didn't catch the last sentence. You said that the peaking of the carbon dioxide by 2030 and then neutrality by 2060. Mm-hmm. So how these things are in agreement with the Paris Agreement now? The environmental agreements of the Paris and the Kyoto Protocol, etc. You mean the agreement? This agreement? Yeah, this agreement, the Paris Agreement of the environment, I believe 2015 or 2016. I'm sorry, I'm not familiar with the goals set up in the Paris Agreement. I think China has announced this goal internationally, the dual carbon goal. So far for us, we know what we know is 2030 for carbon peaking and 2060 for carbon neutrality. So do you mean there's another different time to achieve this goal? I believe the Paris Agreement, as far as I understand, that they want neutrality by 2050. 2050? Oh, yeah, 10 years before that. Okay. That is very challenging. Thank you. Thank you, Doc. We have a very interesting question answer session. Any other question from participants? All right. Doc, it was a very nice presentation. We are really educated on the nuclear program of China. And with that, we'd like to say thank you. Thank you for taking all the pains to stay without connection and everything. Sorry for that. Thank you for taking all the pains. And our regards to Professor Zhang. Thank you so much. Okay, thank you very much. Thank you all for your very nice questions. Thank you. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. We have little time. हमारे पास तकरीबन चंद एक मिनट हैं. आप लोगों में से मेरे दोस्त अतीक अभी भी आए हैं. मैं टेक्नोलॉजी की बात. All right. Okay. Dr. Zhang, are you still on the net with us? Yes. Okay. So I was just shifting from English to Urdu, so I'll stay in English now. And we have our friends here. We are talking of actually green hydrogen in Pakistan. Or sorry, I just Urdu में आ जाता हूँ. We would like your actually vision, which you could share with us in this few minutes which we have, कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को हाइड्रोजन की तरफ लेके जाएं. What should be the methodology to be adopted? पहले तो ये कि क्या लेके जाना चाहिए वाली बात है. अगर yes, answer yes है, फिर हम what methodology should be adopted, or which are the best places to actually where Pakistan Academy of Engineering can communicate to those organizations कि भाई सारी दुनिया हाइड्रोजन पे जा रही है, we should also start going towards hydrogen. And the current status we have already learned nationally, internationally. And what are the best methodologies to be adopted? Kindly share your views one by one. आप आइए यहाँ पे, and we have some time. And then in the end, yes, please. No. Yeah, informally. आ जाइए. एक मिनट. Yeah, Atik. Yes. There's such a distinguished guy, highly qualified and. आप यहाँ आ जाइए. Okay, I can speak. So, and I had an emergency at this station. Would you be given handouts so that we can try and we can't understand, we're not actually a number of doctorates. You take time to understand things. If you give some handouts and at least so that we can look at it and slowly adopt what the concepts are. Okay. We actually all the presentations. समझ में नहीं आ रहा. बहुत ज़्यादा काबिल आदमी नहीं हूँ.
मैं मुश्किल से समझता हूँ प्रेजेंटेशन देने ताकि पढ़ के समझ Okay. For your convenience, हम आपको दोनों तरीके से presentations दे देंगे. एक आपकी USB आपसे शेयर कर ली जाएगी, आप वो देख लीजिए, वरना हमारी वेबसाइट पे भी होगी, ठीक है? But yes, it'll be very soon. We'll put it on the website. Our all previous presentations are also on our website. Okay, तो वो तो इशू तो इंशाल्लाह हो जाएगा. लेकिन आप भी हाइड्रोजन पे काम कर रहे थे एक जमाने में. करने की कोशिश कर रहा हूँ. आके शेयर कर लीजिए हमारे साथ क्या क्या कर रहे हैं आप. अभी कुछ किया नहीं, कुछ अप्रोच किया था मुझे. अच्छा. Somebody had approached me from Ghana because I'm working on a project in Ghana. Okay. He wants to do something on green energy. Okay. So I was meeting him and trying to develop that. Yeah. बताइए कि पाकिस्तान अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में डॉक्टर जमील इज द अथॉरिटी इन हाइड्रोजन. तो उनको they should involve him also, or Pakistan Academy of Engineering also. Besides those who don't know, engineer Atiq is one of the. आपसे अर्ज करूँ ये मसला कहाँ से शुरू हुआ. हमारी पूरी जो लाइफ स्टाइल में तब्दीली आई जब अभी भी नेचुरल गैस डिस्कवर और अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उससे पता लगता है कि नेचुरल गैस करीब खत्म होने वाली. तो नेचुरली एकेडमी ने ये सोचा कि इस बात को न सिर्फ एक बातों में उड़ा दिया जाए बल्कि कुछ और खास के लिए मुतबादिल प्रपोजल भी सामने आए. तो एकेडमी खुद कई काम कर चुकी है. जैसे अभी हमारे स्पीकर ने प्रेजेंटेशन दी थी. एकेडमी ने बाकायदा हाइड्रोजन स्ट्रेटजी पे रिपोर्ट फाइल की है गवर्नमेंट. अब वो जमीन के सामने अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है. Chinese is also there. Our friend from China is also. So yeah, he's listening. Very good. So I would like you to exactly comprehend what the academy is trying to do. We are creating awareness for the first time. Now in this meeting, unfortunately I have to tell you this, I invited 6 vice chancellors of the University of Karachi. None of them have turned up. That is the interest they have. That is what they can find. The quality of education, the interest in technological development and new strategies by the so-called higher education institutions. You can candidate by statement. We are doing a lot. What are we doing? What are we trying to deliver? Even Ahsan, the deputy chairman of the planning commission, came out very clearly, openly in the press, that higher education has not been able to deliver the goals. What's going on? There are 150 universities being funded by the Higher Education Commission. What are we getting? Most of the people who are really qualified to do something, they go away, they leave the country. They are not available. Annually, China was sending about 380,000 students to the United States to capture technology. They came back, and that is the result that you are saying. It's not a day's work. They started development since 1980. They told you that they started development
My speaker of China, he informed you, particularly the new nuclear technology since 1980, about 44 years. Have we started? When I came back from Germany in 1960, I was questioned by my colleagues, by my teachers, by my students, where do we stand? Where do we stand as far as technology is concerned? I said the question of standing would only arise if we were participating. We are not participating. So the question of standing does not arise. We have not started. If you have any milestones, you can say, yes, this is our milestone. We have started. And this is our timeline. We have made this timeline. And we expect to have some output from this institution or that is. I keep on creating from the so-called published annual reports of a number of institutions in the country. Only very few published annual reports, not many of them. Their websites are so poorly managed, I can't explain to you. You can't get any information, data is something big if you want to ask. So that shows the type of management that you have installed, and you are not monitoring. There is no monitoring capacity or let us say mechanism offered by the installers, the government. Perhaps they may be reviewing the annual report, and who is reviewing? Are they in charge of the various ministries? That is the minister. Are they qualified enough? Are they doing their job? Or they are still leaving this to their secretaries and bureaucrats and then. So that is one of the most unfortunate things. Why Academy has been making a lot of thinking on this issue, how to get over this whole thing. Is it possible to bring a change? And is it possible that we bring a change? Where do we stand? Is it possible that we disseminate our thinking, the thinking of the academy? Or there will be no response? It will be very poorly balanced exercise if we want to do it. I want to consult you in this. Very, very strongly consultation. There is an institution which we have established. We are on our own without the assistance of anybody, or the assistance of the government. On our own, alhamdulillah. And I am very much satisfied with the quality that we are able to bring to you in the form of our symposium. You have noted this is 33rd Symposium that we are holding. How many other institutions have done this and brought foreign expertise to bring to you the latest know-how to you? This is what we have done. And we are not limiting it to ourselves. We are logging it to our website. All our proceedings of the symposium are available to you. You can download. What else should we do? But that response that we expect is very poor, I can tell you, poor from the side of the engineering community as a whole. They are not bothered. There are very few people who will be seeking resources in this country, how to overcome this whole issue.
But I don't know of any organized effort, any institutionally organized effort by the engineering community, in order to keep pace with the development, to at least know what's going on. It's a part of a thing to think that we started developing nuclear plants ourselves, although we have got a fight, right? I keep on asking, have we acquired the know-how of designing, of developing, as China and Russia did, as they're doing, and what's the work of their own? Are yet to come across or are yet to know whether a design capability has been developed by the Pakistan Atomic Energy Commission. And yet, very unfortunate. To be a question from. Yeah. So this is what I would like to emphasize to my friends here. I need your advice. Very briefly, how the Academy of Engineering, Pakistan Academy of Engineering, should move forward in future in respect of our own environment, right? Sir, I really appreciate the work which MIPI is doing actually, and if you compare it with other engineering organizations, it's this is a totally an apolitical organization, doesn't have any other intentions. It's like purely out of like our national interest. So really appreciate the vision actually. The problem in our country is this, that our government is sleeping and most of the other, people who are in power are sleeping, right? And we have to find a solution for that. So in my view, here's what we should do. We identify 1, 2, 3 areas which are very critically important and which can be really beneficial for our country economically, and in all the other aspects in youth development, economic development. 1, 2, 3, just a few of them. And try to identify partnership in the private sector, which can help in sustainable adaptation. So, for example, let's suppose this. I'm not an energy expert, but let's suppose if we identify that hydrogen adaptation is very critical for our sustainable growth, and that's what the future is after considerable thinking, we try to identify a private investor which can help us in adapting that technology in liquidation of hydrogen and distribution of that hydrogen equipped cylinders to the destination where natural gas is not available, so that they can start adopting it, right? It may be economically feasible. That's why I'm saying KGB do economical studies first, and then feasibility first, and then start working. So we should stop. You can continue to knock the doors of government, sir. 40 years, 50 years, the results are in our hands. It's actually in front of us. I guess all of our are actually witnessing it, right? So the solution is that we have to do it ourselves, and the best way is to have it as a commercialized, as an adaptable, as a technologically adaptable solution to the markets. This room, and mashallah, you have all the resources that you have some context. You have the vision. So, for example, there's another, I guess, AI sector, right? We have been talking about AI for quite a long time. Now is the time to move. Move just beyond what we are doing. So what we should do is to have real adaptation, some private investment, through some private companies, through some private organization, which should find it economically feasible as well. So because that's what the profit of the private organization would come from. So it will be a win-win situation
for the country as well as the private investment. I mean, we have the contacts. There are so enriched alumni of NET and other engineering outside Pakistan as well. Very, financially stable as well. They are willing to, help the country as well. So these are the ways we identify 2-3 areas which are economically very feasible, which are of our national interest, and focus on those 2-3 areas only. Because if we are just, widespread our concentration, like 30-40 areas, we cannot do it. We have to identify 1-2-3 areas and then start working through private partnership. We should adopt government if the government is willing to do so. We can continue to knock the door of the government, but let's not rely on government, sir. I mean, it's not going to help. Yeah, I fully agree with you. That we have not made any serious attempt as such up to now to get partnership with the private industrialists. Although the government have constituted already for at least 3-4 years, public partnership institution is there, and the head has been appointed to chair the board. I have not come across any project for that matter. But after all, now how to attract the private sector, the industrialists, small, medium, or large industries in the country, to come together, to sit together, and then work out. Yes, this is feasible, this can be done, and can be done locally. Ahsan Academy will be prepared to provide all the data for their feasibility study. Any feasibility study is required by any industrialist or private group. Fine. That Pakistan Academy can possibly provide from its own resource without making any charge. What else? Otherwise, it is a matter of consultancy. That if you want to acquire a feasibility study, then consultancy will charge a lot of money. Pakistan Academy will provide its resources to provide data for the feasibility study to any industrialist, private sector, fine. So this is all of my colleagues are welcome. If they can attract anybody, fine. They should contact us and then we can sit together. Fine. Just for your information, Dr. Jameel खुद कहे थे पाकिस्तान की one of the largest private sector entrepreneur, वो स्टूडेंट भी था और उसने कहा था मैं करूंगा भी, लेकिन it never turned into reality. वो हमारा business person wants money today, not tomorrow, not 60 years, what which China is planning. We need to have a philanthropist view also in the entrepreneur. हमारा मतलब ये है कि, for example, the top post investor अब नाम बताया अगर पांच नाम लेंगे उनमें से एक था. He after promising that thing did not materialize, and he did not have the commercial angle. What he said in the meeting that I do not have any commercial angle. Yes. I just want to promote the technology. Yes. And even then, it did not see that. Let me find out my thought. मैं सिर्फ डॉक्टर शरीफ मैं बता रहा हूँ, एफर्ट की बात कर रहा हूँ. अब इससे ज्यादा क्या एफर्ट कर सकता है इंसान कि एक अपना स्टूडेंट हो जो इतनी टॉप पोजीशन पे हो, वो एक्चुअली हमारी से ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली वो स्पॉन्सर कर सकता था फॉर इयर्स, not one day, years. लेकिन even one technology in one thing will not materialize. Second thing is कि हम अभी भी जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपसे व्यूज जो ले रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम किस तरीके से, और एक आपने बताया कि किस तरीके से हम चीज पर फोकस करें. हम बैठे बैठे टेबल माइंड से लेट्स थिंक ऑन वो फ्यू थिंग्स एंड उसके बाद शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. शॉर्टलिस्ट कर देते हैं बड़े बड़े, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वन साइड. हर एक पार्टिसिपेट करता है, डॉक्टर साहब शुरू करते हैं या
जो भी मैंने बात करना चाहा, and then we can. Those 5-6 areas which you think are the most important Pakistan या पाकिस्तान को focus करना चाहेंगे, right? आप स्पीकर दे दें, आप बताइए क्या क्या आप माइक पास करते हैं, आप कर लीजिए पहले, आप कर लीजिए पहले। कौन से एरियाज हैं? एक तो मिनरल सेक्टर में। कौन सा? मिनरल सेक्टर। Minerals. Okay, that's one more. क्या बताया? Minerals, sir. Minerals. मिनरल सेक्टर में जो है वो माइनिंग नहीं बल्कि मिनरल्स। Very nice, very nice. अच्छा एक आप बताइए। कहते मिनरल्स को आप मटेरियल्स का कहें तो ज्यादा बेहतर है। मटेरियल्स के सारी दुनिया मटेरियल्स पे फोकस कर रही। कि आप ये एवरीवन, हम डॉक्टर साजिद। ये बिल्कुल मैं ऐसा कहूँ कि क्योंकि मेरी साइड मेरी बीएजी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर है, तो बैटरीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। और दूसरा मिनरल, उसमें क्योंकि एक बड़ा हमारा अबंडेंट फॉर्म में एनर्जी अवेलेबल है। और कल ही हमारी मीटिंग हुई थी, डीजी जो हमारे हैं टीडीएफ के द ट्रेड अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से, ये उन्होंने भी कहा कि हम आपको मिनिस्ट्री जो है वो कॉमर्स आपको सपोर्ट करेगी। और मुझे बताया इससे पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात की थी, 1-2 मीटिंग हुई, उसमें कोई नहीं आया, पर हम उसको रियल फॉर्म में काम करना चाह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मटीरियल, तो दूसरा ये एनर्जी स्टोरेज, आप बताइए। एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, एक एस्पेक्ट है उसका, ऑब्वियसली ताल्लुक मटेरियल से ऑटोमेटिकली। और दूसरा है डिपेंडेंसी, जितना भी हम फॉरेन फ्यूल्स हैं उन पर डिपेंडेंसी कम करें। तो उसमें जैसे बैटरी लेके एनर्जी से स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज में सिर्फ बैटरी नहीं आती, तो क्या भी आती, ठीक है। तो ये ग्रेजुअल पैथ है जो आज के सारे प्रोडक्ट्स की ज्यादा हो रहा है, ये कि हम डायरेक्टली हाइड्रोजन पे एकदम नहीं जा सकते क्योंकि एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है सारी बहुत। तो इनडायरेक्ट वेज का तरीका ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये कि जो भी हमारे पास मुख्तलिफ जो बॉटलनेक्स लोग इश्यूज के फॉर्म में लेके आ रहे हैं कि भाई ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, उनको कन्वर्ट किया जाए इस फॉर्म में कि एनर्जी हमें मिले और उसकी स्टोरेज में पहले काम करे, ऑटोमेटिकली आगे सारी प्रॉब्लम का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, हम लोग हमारे होंगे तो तमाम चीजें पर फोकस होते जाएंगे। बहुत मुश्किल इंडस्ट्री को पहले, क्योंकि इंडस्ट्री में जरा सबसे ज्यादा गवर्नमेंट भी हैंडल की और उसके हमारी टेक्नोलॉजी भी मैच्योर भी होती है। दूसरी बात ये कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में मैंने देखा कई मतलब गैस की वजह से प्रोडक्शन भी लो करनी पड़ती है। तो जब हमें गैस की वैसी शॉर्टेज हो रही है तो आई थिंक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी शुड बी फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। थैंक यू। तो आपने राइट permit me to digress. एक issue है जब डॉक्टर साहब के I wanted to bring to डॉक्टर साहब knowledge. I wanted to bring to your knowledge. I'm digressing. I'm talking of the engineering education in Pakistan. It has really gone down because we are a company which is employing engineers, and we engineers with good sound theoretical knowledge. And I'm sorry to say that things have gone down very bad. And I think one of the reasons is because of the extra use of software, the feeling of the subject and the concept are gone. They have no concept. They want to put in a software, use the software and use it. I think the Indian curriculum has to go back a step backward, get into the old method of doing things manually before you go into software. Doctor, gut feeling, because we are running a consulting company and we have currently 45 engineers in the company, and we have got a lot of iteration. Because when we train people, I've lost about 300 engineers in the last 15 to 20 years to the Middle East. Then we go and get fresh engineers, and they're pathetic. They're absolutely pathetic. I can tell you the engineering background that we were imparted when you were running the institution, the old college, is much better. I can stand and talk to a fresh engineer, and he's clean board. So I think we need to really take serious attempts
to get the education improved. Because that वो आपने बड़े यानी कोर इश्यूज को फोकस किया है। अब देखिए मसला सारा ये है कि एकेडमिक सिलसिले में क्या कर सकते। मैं तो हर चीज इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम क्या करें। इनफैक्ट काफी अर्से से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पाकिस्तान में तकरीबन 21-22 हजार ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं इंजीनियरिंग में। मान लीजिए साहब उनकी क्या क्वालिटी है किसी को पता है? नहीं पता। टेस्ट टू समथिंग। तो मेरी ये तजवीज होगी कि एक बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाए और सबका दावत दे और ये इसका टेस्ट करा के सर्टिफिकेट इसका ले लीजिए तो काम करेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? ये मैं अपनी तरफ से खाली थी कह रहा है, इसका तजर्बा मैं बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से तकरीबन 40 साल पहले मैं फिलीपाइंस को एग्जामिन करने के लिए गया, इसलिए कि यहाँ से एक बहुत बड़ा माफिया का ग्रुप बहुत जाता था और डिग्रियां लेके यहाँ उसको मैं सॉर्ट आउट करने के लिए गया। ब्लैक से मेरा इस्तेमाल हुआ वहां और काफी थ्रेड्स और ये होता। लेकिन एक चीज में फिर वहां सारा संभाल के करके लाया। वहां एक गली में होता ये थे कि गली एक तरफ से जा रही दूसरे से पलट नहीं सकती। 3-4 यूनिवर्सिटियां एक गली में फिलीपाइन में बनी हुई थी। उनको सॉर्ट आउट करना था कि यहाँ से माफिया जमती हुई चौधरियां डिग्री दिला के अंदर कि हाउ टू कोप अप विद दिस इशू। तो उन्होंने एक इंतजाम बहुत किया हुआ था फायदे से कि सेंट्रल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरीट एक इम्तहान देती थी तमाम ग्रेजुएट और उनका रिजल्ट छाया करती थी, छुपाती नहीं थी। उसको मैंने यूज किया और मैंने कहा कि अगर 40% भी किसी यूनिवर्सिटी ने हासिल कर लिए उनके कैंडिडेट्स ने पास के रिजल्ट तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उसको डिग्री, अदरवाइज नॉट। ये मैंने फार्मूला मेरा आज तक वही चल रहा है। तो अब यहाँ जरूरत इस बात की भी है कि हम हर ग्रेजुएट को बराबर समझ रहे हैं। क्या ये वाकई सही? हर किसी का होता ये है कि जब एक एम्प्लॉय जाए तो जैसे अतिरिक्त शोर मचा रहा है यार क्या हो ये सही है, ये तो ये भी नहीं जानता वो भी जानता, क्या कर लिया यार। इनकी जो फीडबैक है अगर आप इनका हासिल करें अब उसका क्या करेगा फीडबैक? यूनिवर्सिटी को तो कोई सब दिलचस्पी है नहीं। ये बता दूं यूनिवर्सिटी में तो छाप की एबट का ये बना लिया, कम्युनिकेशन कर लिया, ये बना रही, ये तमाम चीजें और उसके ऊपर एक क्वालिटी पॉलिसी बनाई है सबने। आप जानते हैं लिखी हुई है क्या क्वालिटी पॉलिसी जानते हैं ना कि भाई जो कुछ भी क्वालिटी पॉलिसी का ये है कि जो कुछ आपने तय किया है उसको आप फेथफुली इम्प्लीमेंट करना है नहीं कर रही है क्वालिटी। अच्छा और ये कि आप ये तय करके बैठ गए और ये सब्जेक्ट आपने तो क्वालिटी अचीव कर ली। ये असेसमेंट किसने किया? क्या ये असेसमेंट होना चाहिए? आपने सारे कंडीशंस को रेगुलेशंस को इख्तियार करके और ये क्वालिटी बना के तय किया कि अब हम क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। क्वालिटी कौन चेक करना? आई में नहीं हम और मुझे बता दे नहीं ये फला आदमी चेक कर रहा हूँ, ये फला रेस्ट्रिक्शन चेक कर रहा हूँ, एजुकेशन चेक कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी तो नहीं कर रही चेक। यूनिवर्सिटी ये कर रही है जिसका एडमिशन हो गया उसको डिग्री मिल गई। झूठ बोल रहा हूँ मैं। तो बस बताइए आप मुझे दुनिया में ऐसा होता है? दुनिया में कोई ड्रॉप आउट नहीं है बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में ड्रॉप आउट नहीं तो नजर आते क्यों?
यहाँ तो जिसका एडमिशन हो गया डिग्री में नहीं चंद क्वालिटी शोर मचाता है क्वालिटी बोगस धोखा देना। अच्छा और जो कुछ दोनों ने होता रहता है उसका मैं यहाँ बड़े खराब हालात छोड़ दीजिए। असल चीज ये है कि अगर आपका ये मकसद है और आप चाहते हैं कि क्वालिटी इम्प्रूव हो तो क्या होना चाहिए और उसका जजमेंट कौन करेगा? कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी हो जब भी तो जजमेंट होगा। थर्ड पार्टी है आपके पास कोई? मैं ये प्रपोज करना चाह रहा हूँ अगर मुझे हिम्मत नहीं पड़ रही है करने कि पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी आप टेस्टिंग एजेंसी दाखिल कर दे और वो टेस्ट लेती रहेगी वॉलंटरी एजेंसी से कोई मैंडेट नहीं किया आपको टेस्ट लगा नहीं का हल कर लो आपकी हैसियत बताइए होगा ये होना देगा। क्या मेरा प्रपोजल शुद्ध कुछ वाक्य में लगता है? इस कंट्री में ये किया जाए कि भाई ये तो भला भला आम चाय करते रहते हो और फंडिंग बेतहाशा दे रहे हो मेरे फंडिंग का कोई वो नहीं है कोई क्राइटेरिया नहीं है तो क्राइटेरिया निकाल लो क्या बंदा से इसके बेचे में फंडिंग होगी तुम क्या डिलीवर कर तो फंडिंग में अभी तो पॉलिटिकल बेचे में फंडिंग हो रही है डिलीवरी बेचे नहीं हो रहे बेतहाशा इंग्लैंड से फंडिंग चली जा रही है यहाँ से वहां। तो ये मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया कि बहुत सारी चीजें हमारे जहन में आती रहती हैं लेकिन हम टेस्ट करना चाहते हैं ग्राउंड के ऊपर कि ये वाकई फिजिबल वर्केबल है या मेरे जो शेख चिन्नी की तरह आप घुमा दे रहे। तो ये मैंने जो टेस्टिंग का मैंने आपको हवाला किया अगर पाकिस्तान में शोर होगा बच रहा है क्या हो रहा तो लेटेस्ट एस्टेब्लिश टेस्टिंग एजेंसी वॉलंटरी बेसिस पे आप टेस्ट कराएं कोई मैंडेटरी नहीं आप जाए टेस्ट करा के दे देंगे मेरे पास ये सर्टिफिकेट तो आपको फिर मार्केट रिकॉग्नाइज करेगी कि नहीं करेगी आती बिल्कुल सर आई थिंक इट्स वेरी मीडिया इसको होगा ये जैसे एम्प्लॉयर जन सब इनिशियली इट्स वॉलंटरी तो पीपल आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द क्लास but the employer asks for your certification from certification yeah then you will become in practice इसलिए आपको एजुकेट उनको भी करना है एम्प्लॉयर्स को भी करना खान इसकी इसमें टेस्ट होगी कि उसमें किसी का वो नहीं है पैसेंट इंटरेस्ट असल चीज ये इसके it has been satisfied of like quality assurance. There is no validation. नसीम साहब आप ही कंटिन्यू। Zhang, sorry, we were once we are in that mood, we just translate ourselves, shift ourselves to Urdu. We are very thankful to you for being with us for all this time. I'm thankful to all the participants who very aggressively asked questions. I would like to close our green hydrogen in Pakistan, the 33rd Symposium of Pakistan Academy of Engineering, with a note of thanks to the chair, President Dr. Jameel Ahmed Khan. मेरी आवाज नहीं आ रही? All right. Okay. All right. So I'd like to say with a note of thanks to everyone for participating, especially Professor Dr. Jameel, who is a single person who is ensuring that this academy runs and keeps people alive on burning topics. Thank you very much. We'll go for lunch, but before that, we'll have a photograph here. आप kindly सारे पीछे खड़े हो जाएं.
with that background, we'll have a picture. Thank you. दरम्यान में 2 जगह डॉक्टर साहब के लिए छोड़ दीजिएगा. आइए आप लोग. यार वो एक मिनट तस्वीर आ रही ये बहुत अच्छा काम चल रहा है. ये 2-3 लेना क्योंकि आंखें बंद हो जाती है. Very good.